technical session 2. I welcome Mr. Pankaj Gurjar, the Vice President at CMI. He is heading sales in various southern and western states, including rest of Maharashtra, Gujarat, Tamil Nadu, Kerala, and Pondicherry. He holds engineering degree and master degree in management. I also welcome Dr. Kaushik Krishnanan, who is Chief Economist at CMI. His primary responsibility is to deliver record level data from the Consumer Pyramids Household Survey to researchers. I also welcome Mr. Prashant Joshi, who is Assistant Vice President at CMIE Private Limited, Ahmedabad, India. And I would like to invite Mr. Pankaj Gurjar to continue with the CMIE activity. Over to you, Pankaj sir. Thank you, Shraddha ma'am, giving us a brief introduction about my team. We will just give you a brief about what services already Anand Agriculture University is having, and we will also give you a brief about the CPHS, the service which is used by many institutes. So I just wanted to explain you. CPHS is the service. Prashant, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, we can. Okay, so CPHS is the service which gives you, it is a household panel level data, and it covers something like 322 towns and 3,965 villages across the country. So I will hand over it to Kaushik, who heads our CPHS, so that he can give you a presentation on the CPHS. And if you have a query, we can address the query either in between or at the end of the presentation. Thank you, Pankaj. I will share my screen. Pankaj or Prashant, please let me know if you can see my screen. Yeah, we can see. Yeah, we can see, sir. Okay, great. Thank you so much for inviting us. As Pankaj mentioned, I work in the Consumer Pyramids Household Survey Division at CMI. This is intended to be an introduction, a technical introduction about the survey. CPHS, or Consumer Pyramids Household Survey, is India's largest regular household survey today. In fact, what makes CPHS special is that it is a household panel survey, which means the same households are interviewed each time we conduct the survey. As a household panel survey, we are the world's largest household panel survey. We are larger than NSS surveys, larger than other surveys that are conducted for specialized purposes, etc. We are simply the world's largest household panel survey. If I had to describe this in a couple of different numbers, I would use these 5 numbers to describe it. 22 waves, 175,000 plus households, 98.5% of India's population, over 600 indicators, and over 30 papers. I will explain each of these. The survey is conducted in waves. Each wave is the amount of time it takes us to complete surveying all the households in that wave. We started the survey in January 1, 2014, and we do 3 rounds of data collection every year. Each round takes 4 months, which means that we are surveying entire 12 months of the year. As you can see, we have over 175,000 households in the sample. So you may be wondering, how is it possible for us to complete so many households in a wave? The answer is that the survey runs without a single break. We have completed over 1,000 households every single day of survey operations, over 10,000 households every week, and over 40,000 households each month. We've been doing this, as I said, for 22 waves, which means 22 waves of data are already available to researchers. We are currently conducting the 23rd wave of the survey, and that data will also be available to researchers once the wave is completed. As I mentioned, in every single wave, we survey over 175,000 households. That covers every state and district you can probably think of. As Pankaj ji already mentioned,
We are in over 300 towns across the country and almost 4,000 villages across the country. If you ask us, what part of India do you not survey? That is what this 98.5% of India's population says. We already survey the part of India that contributes 98.5% of India's population. 1.5% or less are parts of the country that we do not survey. So the survey is truly representative and we cover the length and breadth of India. Each time we conduct an interview at a household, we try to measure every aspect of that household's well-being. This includes information on the individuals, information on the households, information about income, information about consumption. I'll explain these in some detail in just a few minutes. Lastly, I would say that already over 30 research papers have been written. Many of them have been published in the top journals across the world. Our data is trusted by the world's leading researchers, but that is because we spend a lot of time doing technical sessions like this to discuss the quality of the survey, the documentation, the processes used in the survey, etc. But in today's talk, I will focus on trying to tell you a little bit about these 600 indicators. This is the data that we actually collect in the survey. These 600 indicators can be broken down into 4 parts. One is about the people of India, the other is about households, the third is about income, and the fourth is about consumption, as I mentioned earlier. In people of India, it is all the same survey. We just break it up into 4 parts so that it is easy for people to visualize and to think about. We survey every one of those 175,000 households in each round of the survey. And we survey the members inside those households. That amounts to almost 1 million people. 1 million people we directly survey and we ask them, what is your caste? What is your gender? What is your marital status? What is your religion? What is your relationship to the head of the household? What is your age? What is your state of origin? What is your migration status? Did you come to this household from somewhere else? Are you going to leave this household to go somewhere else for migration, etc.? We also capture very detailed information on education. We know what are the educational qualifications of each person in the household. We know whether they are literate or not. And we know what is the discipline of their study, if they have studied beyond a certain point. In terms of financial inclusion, we ask many questions. We ask whether these people have life insurance accounts, bank accounts, Kisan credit cards, regular credit cards, EPF accounts, health insurance, mobile phones, demat accounts, etc. We ask lots of questions on employment. In fact, we also write about employment publicly. Other than employment status, which is what we usually write about, we also know a lot about where people are working. For example, in the question place of work, if somebody is working, we know, are they working in a company? Are they working in a university? Are they working in a government office? Are they working in a farm, in a warehouse, in a mandi, etc., etc., etc. So various different places of work are captured. We know what industry they're working in. We know whether they're agricultural workers. We know whether they are doing animal husbandry, etc. We know the occupation that they perform. We know whether they are full-time, part-time. We know whether they are salaried, daily wage, casual labor, self-employed, temporary salaried, permanent salaried. All of that information is there on their employment. Then we capture a lot of information on health. We know, are they on regular medication? Are they healthy? Are they hospitalized? We also ask them, every single person in the household, how do you spend your time in a typical day? How many hours do you spend on indoor entertainment? How many hours do you spend on hanging out, on travel, on religious activities, on outdoor sports, learning, work, etc.? All of this is captured about the people in the survey. On top of that, we also ask questions about the household itself, because sometimes the right unit to study is the household and not the individuals inside the household. I'll explain what I mean when you look at the information we collect on asset ownership. We ask every household at the household level, not at the individual level. Does the household have a TV? Does the household have a generator? Do you own any cattle? Do you own a computer? Do you own cars, washing machine, cooler, AC, fridge, two-wheeler, tractor, etc.? And we ask in 2 ways. Do you own any of these things? Or do you wish to purchase any of these things in the next 4 months?
Especially for farming households, for example, they may want to purchase a tractor or a cattle depending on the time of year, depending on how good was the harvest season, depending on the cost of other inputs, whether they got a loan, etc. Now, if you look at savings behavior at the household level, we know whether they have saved in various different kinds of instruments. For example, did they save using Kisan Vikas Patra? Did they save by an FD account, or using a chit fund, which is very popular in South India, or maybe using a mutual fund, etc. We also know about how the household borrows money. We know all the sources and all the purposes. Household can borrow money from various places. The household can borrow from its family members. It can borrow from its employer. It can borrow from the neighboring shop. For example, many agricultural households will usually have some credit from the fertilizer shop, from the seed shop, etc. Or it can borrow from a bank. It can borrow from a mutual microfinance institution or a self-help group, etc. And then for every borrowing from any source, we capture the purpose. Did they borrow because they needed to pay off some other debt? Did they borrow because of a wedding in the family? Did they borrow because of some educational expense, etc.? Then about every household, we know a lot about the amenities that that household enjoys. What is the type of roof that the household has? What is the type of wall that it has? How much water does the household get access to? How much electricity did the household get access to? Does the household have a toilet on the premises of the household? How long does it take the household to travel a distance of 10 kilometers, etc.? We also ask questions about sentiment, household sentiment. Questions about what is the quality of the finances of the family. Questions about how does the household think India's economic condition is. Questions about whether it is a good time to buy durables, etc. Finally, we capture very rich data on both income and consumption expenditure, the balance sheet of the household. On the income side, we capture information about monthly member income for every single earning member. This includes wage income, interest income, dividend income, pension income, all broken down separately. We also capture monthly household income. Of course, this includes all the income from members, but it also includes income that only household receives, but not individual members, such as government transfers. Suppose the household gets 100 rupees from the government. That comes to the household, not to a given member. So it's collected at the level of the household. Private transfers, again, very popular in many southern states. For example, in Kerala, a lot of families get money because somebody is working overseas, maybe in the Gulf, sending money back to home. That is captured at the household level. Business profits, this is very important. Many households are involved in agricultural work, either farming, animal husbandry, something or the other. In that case, it is not as if they receive a wage. It's not as if they get a salary from somebody where they get 10 rupees a day or 100 rupees a month, etc. Instead, they get some money by selling their produce. That is captured as business profit income, and that is captured at the household level because all the members of the household jointly are working to produce whatever it is that is sold. This is, in a nutshell, what we capture on the income side of the distribution. We know in great detail how the household is earning money every single month. Finally, on the expenditure side, we capture a lot of information on how the household is spending the money that they earn. We capture monthly household consumption expenditure for 150 different categories. For example, how much is the household spending on EMIs every month? How much is the household spending on food? And this is broken down into cereals and pulses separately, vegetables and fruit separately, meat separately, eggs and dairy products separately, cornflakes, different kinds of packaged foods. All of that is captured separately as different expense heads. We capture information on how much is the household spending on power and fuel, on recreation, intoxicants, communication information, food, cosmetics and toiletries, transport, clothing and footwear, etc. In fact, along with this monthly data, we even capture weekly data for about 30 categories. The reason we capture the weekly data is to ensure that there is no bias in recall. We check how much does the household say they spent every week. And then we check, is the monthly number correct? Because the weekly number and the monthly number should have some relationship. And using that, we adjust the monthly number
to make sure that the household is not suffering from some recall bias. In this way, we do many things in the survey to ensure the high quality of data that we collect. I'll give you one example of how detailed our health consumption expenditure is, household consumption expenditure is. If you look at our health variable is broken down into many components. You know how much money the household spends just on hospitalization, or just on health supplements, or just on doctors and physical therapists, etc. This level of detail is very detailed. So you can drill down on any of our consumption expenditure heads and focus on just a particular category or maybe a couple of categories of expenditure. The intention of the Consumer Pyramids Household Survey is to capture data from the length and breadth of India, from Kashmir to Kanyakumari, in every state, in every district across the country, across a wide range of topics. No matter what the household does, household could be doing agriculture, it could be doing a salaried job in a government, it could be doing industrial job. No matter what, we ask the same questions, we capture all the data. The data is made available to researchers so that they can study questions that are important when studying different parts of India's economy. For example, just last month or last few months, two very interesting papers on food security were published in some top global journals by some researchers in the Tata Cornell Institute, where they study questions about food security. We are finding increasingly many uses in agriculture, in other areas, but our aim is to produce data that can be used by any researcher in any field to study what is happening to households in India. It is a really interesting and technically demanding thing to run this survey. I have not talked too much in this presentation about how we run the survey. How do we do the sampling? How do we select households? How do we make sure it is representative? How do we approach the household? What questions do we ask? I have told you what questions we ask, but not how we ask the questions, etc. If there are any questions about how we conduct the survey, I'll be happy to answer those questions in the Q&A. But from a perspective of introducing this audience to the Consumer Pyramids household, this in a nutshell is the Consumer Pyramids household. We capture all these indicators on 176,000 households 3 times a year across the length and breadth of India. It is a really amazing feat, and we thank you so much for your time. I'm happy to take any questions. Thank you. Shraddha ma'am. Thank you. Yes, sir. Can I welcome Mr. Dr. Kaushik Krishnanan, sir, for the next? Yes, ma'am. Okay. Yes, sir. Over to you, sir. I have already mentioned, given your introduction. No, he has already shared his view. But ma'am, just wanted to know, can audience ask the questions? Like some researchers or faculty members, are they allowed to? Yeah. Not an issue. Okay. Yeah. So let us wait for a few minutes. If there is some question, we can continue with that. Okay. We'll continue the second part of the training. Okay. Right. If you can ask from the faculty members or researchers, if you have any questions related to CPHS, please ask to Kaushik sir or Pankaj sir. They are there for next 5 minutes. Pankaj sir, anything else you would like to add here? Yeah, for the I would like to add a couple of things which will be useful from the agriculture perspective. See, the households, we are also capturing a lot of demographic details of the household. Now, suppose I wanted to know each region wise. We have divided the whole India into 99 regions, agroclimatic zone wise. Now, suppose I wanted to compare how the South Gujarat farmers' income with the Assam's, one of the regions of Assam's, or all the 99 regions of Assam's. I can compare the incomes. I can compare even assets what they have. How many of the farmers of different regions have TV, or how many have cattle, or different kind of asset, even TV, fridge, or car, or a tractor, or any kind of thing.
So how can I compare that is available on different parameters? I can compare on income, I can compare on the expenses, I can compare on, there are something like 600 indicators. The way you wanted, you can compare it. In that also, like suppose somebody wanted to go further in demographic, is the farmer family has, how is the education of farmer family? I can take different regions of farmer family, I can compare and try to compare how many households in farmer family are graduate or 10th standard pass or 12th standard pass or only less than 9 standards. So I can compare that part also, it is possible to compare. I can compare, give me all the different types of household where income in the farmers only, where income is above 1 lakh rupees or below 50,000, below 10,000. So even farmer families or compare with the farmer and any other parts. So similarly, any other comparison, non-farmer also you can do. I'm just giving you an example. The data can cut the way you want it. So if you have any questions, please ask so that. Yes, sir. There is one question by Kuldeep Rajput. He is asking which sampling method you generally use. Okay. So Kaushik, will you take that? Yes. Sir, thank you for your question. We do stratified multi-stage random sampling across the country. By that, I mean in every state, as Pankajji said, we break up the state into different regions based on agroclimatic conditions. Then within each of those regions, we randomly select towns as well as villages to be a part of the sample. Minimum 30 villages are selected, and one small town, one medium town, one large town, one very large town minimum are selected. There can be more than 30 villages, there can be more than 4 towns. This is the minimum. All of them are selected at random. That is very crucial and important. Then within every town, we randomly select the parts of the town to be surveyed. Every town is broken down into wards, and the wards are finally broken down into census blocks. So we randomly select census blocks inside every town to ensure representative coverage within the town. Minimum 21 census blocks are selected for every town. As the town gets larger, we select more and more blocks. Within every census block, finally, we randomly select 16 households to participate in the survey. Same thing we do in the villages. Randomly, 16 households are selected to participate in the survey from every village. So it is multi-stage because first state is broken into agroclimatic zone. Agroclimatic zone is then from there we take villages and towns separately. Then from towns we take census blocks. Then finally we get the households both in the village as well as in the town. It is stratified because we stratify on town size to create small town, medium town, large town, very large town strata separately, as well as the rural stratum. And it is randomized because at every stage of the multi-stage and in every stratum, we randomly select. So we randomly select villages, randomly select towns, randomly select census blocks, and then randomly select households. This random selection is what allows us to have a representative sample that ensures that the sample is representative at the rural and urban level inside every single agroclimatic zone, every state, as well as the country as a whole. So that from a research perspective means that if you are interested in doing research only on one agroclimatic zone, our sampling methodology ensures that even inside that agroclimatic zone, you have representative sample of both villages as well as towns, both urban as well as rural households. That is the feature of the survey. We spend a lot of time in the sample design and the survey execution. If you would like, I can answer any follow-up questions that you have. Alternatively, at our website, all of our documentation about sampling is available. And so not only can I answer any questions now verbally, all of it is written down so that you know exactly how our sampling is done. Sir, I hope that answers your question. Yes, sir. As of now, there is no question, so you can continue the program. Yeah, I can just add to what Kaushik said. One is sampling question, but now you look at it. Suppose I take the households by different regions
and only let us say I wanted to compare rural India household, farmer household, and I can compare as a study purpose. I can say how many of the percentage of the farmers are in debt, debted. How many people have taken loan in the farming community only, right? I can look at that side, and that loan, is it taken from a formal channel or informal channel? I can go in detail. Is it taken from a neighborhood? Is it taken from an MSME or any microfinance, or even a formal way? It is coming from a bank or a kind of NBFCs, correct? So you get a purpose also. You also get from which channel they got it. So that study will be quite interesting from the agriculture university point of view. What is happening to the farmer? So that is also covered. That can be also analyzed in different ways, by region, by or any other way, or going in detail of one particular region. Correct. Suppose one particular like Punjab, or the farmers are maybe having lot of debt taken from the Adityas, right? Maybe in Gujarat it may not be that. It may be with the microfinance, right? Or in Tamil Nadu it will be more microfinance, and Gujarat it will be more from the formalized bank. So you will come to know how the things are happening in different sub parts of the country, how the money is raised by farmer, or what time the money is raised. Secondly, as we have the data coverage, as the 22nd, 23rd wave is going on, you can look at, if suppose a natural calamity happened in that region, what has the impact of that in that particular region? Let us say flood happened in Bihar, or flood happened in some part of the Saurashtra or any other region. Then what is the impact of that particular area? What happened? Or too much rain happened in one particular area? There is a problem with the income or any other thing? Is the debt increased of the farmer? So that kind of analysis also can be done, because you can take that event and go back and see what happened after that event, 3 months or 4 months when we have done the survey. This will add lot of variables you can add, because the data is available from 2014 onwards. This is just, I thought I will just add to what Kaushik has said. Any questions if anybody has? Or Kaushik ji, you wanted to add anything? No, Pankaj ji, I think you have covered everything very extensively. Thank you. Thank you, sir. As of now, there is no question. So yeah, you can continue. If any question arise, I will ask. Okay. Okay. Yeah. Thank you so much, Pankaj sir and Kaushik sir, for joining in. Friends, we will continue with the second part of the training, where I'll be focusing on the databases which are subscribed by Anand Agriculture University, especially for this NAIAB-CAST project. So there are various databases on agriculture, industry, macroeconomy, company level, and trade data, which are already subscribed. These sessions are divided into two parts. One is agriculture related data, where I'll be focusing on commodities database. And second is first source database, which I'll be covering today. This database is on all those farmer producer organizations, all the companies which are registered in India. And tomorrow I'll be taking care of other databases which are on industry, macroeconomy, state and district performance, and trade performance. So let me just share the screen and let me introduce each of these databases. Just give me a minute, I will share the screen. Okay. I'm not going into much detail of our organization, because I'm sure Yogesh sir has introduced CMI in the first session today. So we are in this domain of primary and secondary data collection, and what we have discussed regarding CPHS, it was all primary data, while now we will be focusing on the second part, which is on the secondary data collection and how those data would be useful to you for the research, for teaching purpose, and to you as a student, right? So this is what our organization does. We are close to 45 years old organization, and here we have subscribed
databases. I'll just share name of those, and then I'll go into detail of each and every database. So the first one I'll introduce is FirstSource database. So FirstSource is a database of all those companies which are registered in India on a registrar of companies, right? So you want to find which companies are farmer producer organizations, or maybe any company which is there in agriculture domain, or maybe you want to find any company which may be in allied activities, right? So you will be able to find all those companies here in FirstSource database. Then comes another database called as commodities database, where we have all those agriculture commodities data. So you can find state-wise performance, district-wise performance. You want to find what is production, productivity, area, so on, right? Or any other agriculture-related data. Or maybe you want to find what are the prices, or maybe what is the arrival of a specific commodity in any given mandi. Apart from this, we also have certain data on land usage and others. So this part, I'll be these two databases, there is commodities and FirstSource, I'll be taking up today. And for tomorrow, there are 4 more databases, which are TradeDX, where you'll be able to get agriculture or maybe any commodities export or import performance. So for example, you want to find how much wheat we are exporting, or maybe some edible oil we are importing, right? And any classification you want to find. So there will be a PC classification, principal commodities, and ITC. These 2 classifications are there, and data is available from 1991 onwards. Now, why this is important? Because the classification was changed in past. So you need to understand what was past classification from 8-digit classification to 6-digit classification. So what is the latest classification? And you want to download some data. So this is DX service. What is DX? DX is data extraction tool, where you can simply select which data you want to download, and then you'll be able to extract all those data in a very few clicks. So TradeDX is there, which I'll be taking up tomorrow. Then there is a database on understanding states performance. So state-wise agriculture performance you want to understand, or state-wise GDP, GSDP, right? Or value of a product or of production, right? Or any other data you want to extract related to state or district, that will be available here. The best part about this database is there is 139 million time series available, and you can also use data extraction service in states of India. So I'll take this database tomorrow. There is one more which is subscribed, which is called as Industry Outlook. So for example, you want to find which all companies are there in food and agro-based products. So those companies and the industries are covered here. So we have various classifications of the industries, and we cover their demand and supply, performance of the individual companies in any selected industry. Then you want to understand what is the forecast of any given industry, or maybe you want to find what is the growth of any selected industry. For example, edible oil, right? So what is the growth, or what is the production, consumption, or maybe import and export of all those edible oil types. That is covered under Industry Outlook. Then there is one more database which is called as Economic Outlook. So Economic Outlook is basically macroeconomic performance, where you will be able to understand what is happening with the Indian economy. So from agriculture sector to manufacturing to service sector, or maybe any specific, any macro indicator you would like to understand, that will be covered in Economic Outlook database. So this database is basically captured from all those authentic sources, be it CSO, Central Statistical Organization, or MOSPI, or RBI, or some other proprietary sources. So we have covered almost all those sources, and close to 2.9 million time series is covered
here in this particular database. So let me start with commodities database first, because we all belong to the agriculture sector, right? We need to understand what is happening in a specific part of country. What is the production? What is Kharif production? What is Rabi production? Right. So all those things are covered in commodities database. Now, for your information, these particular databases are IP-based databases or IP-based subscriptions. So if you are not able to access it now, you can ask to library that please start our outside campus access. Right? IP-based access is allowed only within your campus, while as of now, because of this pandemic, we have already started giving access outside for a limited period. So students and the researchers, faculty members, if you want to access this outside campus, you have to contact library. You can contact Yogesh Ghorasara sir. And before I actually start, let me heartily thank Pundir sir, who has supported us a lot for getting this database subscribed. Yogesh Ghorasara sir, Yogesh Lad sir, and all the other faculty members who have supported us a lot. And we understood the research requirements. We have suggested some databases which are already subscribed now. So I again thank all of them. And let me start with the product now. Okay. So what is there in commodities database? So for you, those who are new to CMI, you need to register yourself once if you have not registered. So I'll just share the registration process, and then I'll go to the actual product part. So those who have not registered themselves, please click here on registration link, click here on register, and then you have to enter your username. That is, you can use any username, but don't use spaces, right? You can use underscore. Username can be alphanumerical. So for example, my name is Prashant. I can use username like Prashant183 or something, right? Or whatever you want to give, but don't use spaces. You can enter your email ID. You can use your aau.in domain if you have, or else you can also use your Gmail or some other domain email IDs, right? Then you want to confirm. You need to confirm your email ID here, and then you need to give title, that is Mr., Miss, Mrs., whatever it is. Shraddha ma'am, before I actually jump to the product, please let me know if I need to change the language from English to Hindi, because I understand there will be many students, right? So if you want me to do it mix of both languages, I can do that as well, right? But till that time, I'm just continuing. Students, you can also share your views. If you want me to continue in Hindi and English both, that is also fine, right? Because the ultimate purpose is we have to learn, we have to understand how to use these databases. So, okay, so you have to confirm your email ID, then title, that is Mr., Miss, Mrs., whatever it is, doctor, whatever it is, right? Write your name, write your surname here, and enter this word verification here. Then, in optional details, you have to enter certain details like your designation. So, as in student, you will write student here. You can write your institute or university name here, and city will be Anand. So, please mention your institute details only. Don't mention your personal details, right? So that we can. So, what happens is why we need this registration? Because in case if you raise some query, some online query to our team, in that case we'll come to know that you have raised this query, or maybe the query is from Anand Agricultural University, right? So please do mention all these mandatory details as well as optional details. Now, once you register yourself, you will receive a password on your whatever email ID you would have registered, and so your username will be which you have registered with, and password is a system generated password which you will get once you register yourself.
Using these credentials, you can log in. Right? It is not mandatory that once you receive the password, immediately your access will be started. You need to request to the library to start your outside campus access if you want. Now, what do we cover here in commodities database? So, as we were mentioning that agriculture performance of India is covered in commodities database. If you want to understand further details, the details are available here in the description. So we cover almost all those agriculture commodities as well as many non-agriculture commodities as well. So we cover 185 commodities and we poll prices from close to 3,000 markets. Now, you might be knowing that you get the data or maybe prices data especially from NCDX. So CMI is one of the agencies who polls the prices from each and every mandi from different dealers, and then we give that particular price to NCDX. So if you want any prices or any data from various authentic sources, you can use commodities database. Okay, now what is the user interface? I'll just explain user interface, and then we will see like how extraction of data is possible. So can you see this particular state's names here? We call it as a regional garland, right? You can see various state names here, right? So if you want to switch from interstate comparison to a specific state, you can do directly that. For example, if I'm looking at some data of all the states comparison, and then I want to look at time series of Gujarat, for example, I simply need to click on Gujarat, and then I'll be able to find time series of Gujarat. Then there is a concept called as geographical timeline. Now, what is geographical timeline? You might be knowing that there are many states where some states got separated, and it may happen that some of the districts are getting separated from some other districts. So, for example, in 2014, Andhra Pradesh was split into Andhra Pradesh and Telangana. Now, you want to see performance of Andhra Pradesh before split and after split. So, from this geographical timeline, you will be able to understand that this is the year or a specific month from where one state got separated from the other, right? Similarly, you can also select some state or districts directly from here. It may happen that all the states may not be visible here, but you can look at these states. If you are looking at some district level performance, you can select districts here from this drop down menu. And if you want to search specific region, you can click here on search region. You want to find a region list. So there is a full list of region which is available here. So for example, in Gujarat, I would like to see which all districts are there, right? So in that case, you'll be able to see all these districts list here, right? So this is what user interface is. Shraddha ma'am, if I may ask, is there a request from student to continue in Hindi and English both? Yeah, there is not an issue. You can continue in both languages. Both the languages I can continue. Yeah. So thank you so much, ma'am. Because my purpose is students should get it and they should optimally use it. Right? Great. Okay. So now I'll also try to use a Hindi. I will try to mix Hindi with English so that we can optimally understand it. Fine. So अभी suppose कोई भी साल के लिए आपको कुछ भी डेटा देखना है तो सबसे पहला एक प्री कंडीशन है either you can go to these tabs and can get certain data if you want India wise time series तो उसके लिए आप ये tabs में जा सकते हैं अलग अलग tabs दिए हैं so tidings है production है inputs है forecast है or else अगर आपको specific commodity wise चाहिए data for example in food grain I want data related to wheat or any specific other commodity I can select
functionality, and many other tabs would appear. By default, you will get 4 tabs, which are tidings, production, imports, and forecasts. Now, what is tiding? Tiding is a small snippet, if you want to understand, कि अभी एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हो रहा है, राइट? सो फॉर एग्जांपल कोई न्यूज आप तो हर रोज काफी सारे न्यूज देखते होंगे, पढ़ते होंगे, राइट? तो वो केस में आपको देखना है कि अभी सपोज ये 10 जुलाई का कुछ न्यूज आया था रिलेटेड टू वीक साउथ वेस्ट मॉनसून इट्स खरीफ सोइंग. अभी ये न्यूज कई बार ऐसा होगा कि पूरा न्यूज आप पढ़ नहीं पाएंगे, राइट? देयर आर सेवरल आर्टिकल्स व्हिच कम ऑन रेगुलर बेसिस. तो उस केस में आपको समझना है सबसे पहले कि ये डेटा क्या है, ये न्यूज क्या कहना चाहता है, राइट? तो हमारी टीम क्या करती है, वी राइट मे बी 10-12 लाइन्स राइट अप स्मॉल ऐसे, जहाँ पे आपको ये पूरे न्यूज का क्रक्स मिल जाएगा. सपोज अभी ये जो सोर्स आर्टिकल है या रेफरेंस इसका यहाँ पे दिया है, तो ये बिजनेस स्टैंडर्ड में ये आर्टिकल अपीयर हुआ था. फिर हमने क्या किया, उसका एक यहाँ पे राइटअप दे दिया सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ये पूरा न्यूज, ये न्यूज़पेपर में क्या आया था, सो दैट यू कैन जस्ट गो एंड रीड इट. ठीक है. अभी ऐसा हो सकता है कि इसमें काफी बड़ा न्यूज यहाँ पे दिया था, या फिर कुछ न्यूज ऐसा था जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड पे था, बट वी हैव एक्सेस टू ऑल दोस न्यूज पेपर्स, ई पेपर्स, राइट? एंड वी अंडरस्टैंड दैट, और उसका यहाँ पे आपको क्रक्स मिल जाएगा. सो you may need to go through some of the articles on regular basis, right? So भी जो भी लेटेस्ट आपके पास न्यूज आता है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा. So this is the first tab called as tidings. ठीक है. आपको यहाँ पे देखना है कोई भी न्यूज है उसका लिंक से, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं. अगर आपको कोई पास्ट के आर्टिकल्स देखने हैं तो आप यहाँ पे मोड पे क्लिक करेंगे, तो उसके बाद में आपका वो पुराने न्यूज का भी यहाँ पे क्लिक मिल जाएगा. Correct. Then you want to understand. So this is tidings. अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक और सेक्शन दिखेगा which is called as documents. तो हम क्या करते हैं, जो भी सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी यहाँ पे पुट अप करते हैं, so that as a researcher if you want to keep some source documents with you, you can. ठीक है. सपोज ये अभी सीजन एंड क्रॉप कवरेज रिपोर्ट ऑफ खरीफ इन गुजरात, तो ये एक रिपोर्ट आया था. ठीक है. वो रिपोर्ट अगर आपको पीडीएफ फाइल में है, पीडीएफ होगा, एक्सेल होगा, जो भी सोर्स डॉक्यूमेंट जो भी फॉर्मेट में दिया है, राइट, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा. ठीक है. सो यू कैन ऑल्सो कीप दिस सोर्स डॉक्यूमेंट्स अलोंग विथ यू इन केस इफ यू वांट, राइट? एंड इफ यू आर एडिंग सम डेटा और समथिंग, दोस अनाउंसमेंट्स विल ऑल्सो कम हियर इन अनाउंसमेंट सेक्शन. फाइन. नाउ you want to understand what is happening with production across India. ठीक है. तो सपोज यहाँ पे एक टैब है जो हमारा लाइक टाइडिंग से, उसके बाद दूसरा टैब है प्रोडक्शन. तो प्रोडक्शन में क्या रहेगा, यू वांट टू अंडरस्टैंड द टाइम सीरीज ऑफ इंडिया. ऑल ओवर इंडिया में अभी कितना प्रोडक्शन हो रहा है वो आपको देखना है, या फिर आपको स्टेट वाइज परफॉर्मेंस देखना है कि स्टेट वाइज कौन से स्टेट में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना उसका प्रोडक्टिविटी है, राइट? तो वो डेटा आपको स्टेट वाइज यहाँ पे एक अलग से टैब है, उस पे जाएंगे एंड देन यू कैन सिलेक्ट कि कौन सा इंडिकेटर आपको चाहिए. सपोज आपको खरीफ का क्रॉप वाइज एरिया सोन प्रोडक्शन एंड यील्ड चाहिए, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. देन थर्ड इज डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा. तो यहाँ पे एग्रीकल्चर का डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको परफॉर्मेंस देखना है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज अभी फॉर एग्जांपल रबी में इंटर क्रॉप कंपैरिजन ऑफ एरिया सोन आपको चाहिए, करेक्ट? So you can select appropriate indicators and based on that you can be able to download certain data. Now let us first look at the time series के अंदर क्या क्या डेटा आ रहा है. So यहाँ पे for example हम select करते हैं crop wise area sown, production and yield, and let us select for all seasons. तो जब भी आप कोई इंडिकेटर सिलेक्ट करोगे, कोई भी यहाँ पे लिंक आपको दिख रहा है उस पर क्लिक करोगे, राइट, तो उसका पूरा पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा. सो वन इज बेसिकली फर्स्ट टैब इज एब्सोल्यूट वैल्यूज एंड सेकंड टैब इज कॉल्ड एज YOY परसेंटेज चेंज. ठीक है. तो यहाँ पे आपको जो डेटा अभी दिख रहा है वो डेटा कौन सा है, ऑल ओवर इंडिया का एरिया
प्रोडक्शन एंड यील्ड का डेटा है, ठीक है। सपोज 1966 और 7 से लेके अभी तक का लेटेस्ट जब तक गवर्नमेंट ने डेटा रिलीज किया है तब तक का आपको डेटा इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। अभी ये डेटा अगर आपको डाउनलोड करना है इनटू एन एक्सेल फाइल, you can download in Excel. There is one more option called as download as data. So if you want to download any file as a text file, in that case also you can download file as a text file. Then if you want to prepare some charts, for example आपको कुछ एनालिसिस करने के लिए ओवरऑल इंडिया में एरिया कितना बड़ा है, राइट, तो आप स्पेसिफिक यहाँ पे जो भी आपको डेटा चाहिए वो आप सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद में आप उसका स्पेसिफिकली चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, डेटा सिलेक्ट करके यहाँ पे चार्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये अभी डेटा आ गया, ठीक है। आपने क्या सिलेक्ट किया था, आपने एरिया सिलेक्ट किया था, तो एरिया का पूरा चार्ट यहाँ पे बन के आ जाएगा। अभी आपको देखना है कि ये जो चार्ट है उसको मुझे डाउनलोड करना है एज ए इमेज, जेपीजी और पीएनजी, राइट। तो उस केस में मैं यहाँ पे पहले इस पे क्लिक करूंगा सो दैट इमेज विल गेट डाउनलोडेड, यू विल बी एबल टू सी दिस पर्टिकुलर फाइल, राइट। So you can use this feature as well. There are several features. I'll try to cover most of them. Right. Okay. Then comes your YOY percentage change. Right. आपको यहाँ पे multiple tabs दिख सकते हैं, जैसे कि हमने एब्सोल्यूट वैल्यूज लिखे हैं कि इंडिया का 67 से लेकर अभी तक का एरिया प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी क्या है। उसके बाद में आपको देखना है कि दिस आर द रियल वैल्यू, वैल्यू टर्म्स में क्या है। उसके बाद में आपको समझना है फॉर एग्जांपल उसका ग्रोथ कितना हुआ है या डिग्रोथ कितना हुआ है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। तो उस केस में आपको यहाँ पे YOY परसेंटेज चेंज का डेटा मिल जाएगा, ठीक है। सो इफ यू वांट टू लुक एट 2020 डेटा, so you can see there was good productivity or improvement in productivity as well as improvement in production in last year in 1920, right? So similarly the data is available. How you analyze which data points you want to analyze, that you can decide, ठीक है। जैसा अभी हम यहाँ पे देख रहे थे कि ये जो डेटा है उसके अंदर जैसे यहाँ पे टाइम सीरीज, स्टेट वाइज एंड डिस्ट्रिक्ट वाइज परफॉर्मेंस आ रहा है, राइट। उसमें आपको समझना है फर्दर कि अभी स्टेट वाइज परफॉर्मेंस क्या है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यू कैन आइदर सिलेक्ट स्टेट वाइज फ्रॉम हियर और डिस्ट्रिक्ट वाइज फ्रॉम हियर, और मे बी अगर आप टाइम सीरीज के अंदर है उसमें से आपको कोई स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट या स्टेट वाइज डेटा सिलेक्ट करना है तो वो भी आप यहाँ से कर पाएंगे। जैसा कि मुझे यहाँ पे चाहिए तो स्टेट वाइज कंपैरिजन देखना है, सो आई कैन डायरेक्टली नेविगेट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इंडिया लेवल टाइम सीरीज टू स्टेट वाइज टाइम सीरीज। लेट मी क्लिक हियर ऑन स्टेट्स ऑफ इंडिया, राइट। तो अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे अभी क्या है, मेरे पास ऑल ओवर इंडिया के जितने भी स्टेट्स है उसका सबका कंपैरिजन आ गया है, ठीक है। अभी ये डेटा कौन से साल का है वो अगर पहले सबसे पहले आपको समझना है तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि हम कौन सा हेडिंग, हम कौन सा रिपोर्ट देख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि वी आर लुकिंग एट फूड ग्रेन ऑल सीजन एरिया प्रोडक्शन यील्ड डेटा, ठीक है। कौन से साल का डेटा है, सो दिस इज 1920 डेटा। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि टाइमलाइन, ज्योग्राफिकल टाइमलाइन आपको समझना है। फॉर एग्जांपल तो ये टाइमलाइन यहाँ पे आ गया, जैसा मैं आपको बता रहा था कि जून 2014 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सेपरेट हुए, करेक्ट। तो यहाँ पे आप तेलंगाना देखेंगे तो उसमें भी आपको जून 2014 दिखेगा। बाय डिफॉल्ट आपको अप्रैल 70 के बाद का ऑलमोस्ट डेटा मिल जाएगा, इसलिए हमारा मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में आपको दिखेगा अप्रैल 70। जैसा कि बिहार है तो बिहार दिसंबर 2000 में से कोई दूसरा स्टेट सेपरेट हुआ होगा, इसलिए उसका टाइमलाइन में दिखा रहा है दिसंबर 2000, ठीक है। सो दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि ये जो अभी आंध्र प्रदेश का डेटा दिख रहे हैं वो उसके 2014 के बाद के सेपरेशन के बाद का, जो स्टेट के सेपरेशन हुआ है उसके बाद का डेटा है, ठीक है। नाउ सो व्हाट वी आर लुकिंग एट द इंटर स्टेट कंपैरिजन, ताकि हमने यहाँ पे क्या क्लिक किया था, हमने यहाँ पे क्लिक किया था स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो स्टेट वाइज कंपैरिजन आ गया। इसमें भी सिमिलरली ये उसका एक्चुअल एरिया प्रोडक्शन एंड यील्ड है। इसमें से आपको अगर कुछ चाहिए, सपोज मुझे देखना है कि कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हुआ था इन
1920, तो इसके ऊपर आप डबल क्लिक कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका डेटा सॉर्ट होके आ जाएगा. सो इन 1920 Uttar Pradesh was having as production. We have not selected any commodity as of now, but it is food grain, and including all the seasons, the highest production was from Uttar Pradesh, then Madhya Pradesh and some other states. अगर आपको कोई स्पेसिफिक स्टेट्स सिलेक्ट करने हैं या फिल्टर करने हैं तो उस केस में यहाँ पे एक ऑप्शन है फिल्टर का, उसमें आप फिल्टर कर सकते हैं. जैसा कि यहाँ पे मुझे स्टेट वाइज, टाइम लाइन वाइज या फिर एपीवाई वाइज मुझे चाहिए डेटा, राइट. तो उसको मुझे फिल्टर करना है. सपोज मुझे आई वांट टू कंपेयर से आंध्र प्रदेश विद आसाम एंड मे बी सम अदर स्टेट्स लाइक छत्तीसगढ़, राइट, और मे बी गुजरात एंड हरियाणा, राइट. सो इफ आई वांट परफॉर्मेंस ऑफ दिस स्पेसिफिक स्टेट्स, आई जस्ट सिलेक्ट, आई विल फिल्टर दोस, और उसका फिल्टर यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है. So this is how you can use, you can filter the data, you can also sort various data. उसके बाद में आपको चाहिए कि मुझे, जैसा मैं आपको यहाँ पे sorting by default दिखा रहा था, वैसा ही आपको multiple columns का sort करना है कि पहले state wise sorting चाहिए, फिर PY wise चाहिए, राइट. वैसा कुछ आपको specific indicators देके भी आप उसको sorting कर सकते हैं. Now coming to the other part, which is again percentage change. राइट, कि हर एक स्टेट में प्रोडक्शन कितना बढ़ा है, राइट. सो यू कैन लुक एट YOY परसेंटेज, दैट इज ईयर ऑन ईयर. इस लास्ट ईयर की कंपैरिजन में इस साल में कितना प्रोडक्शन बढ़ा है, एरिया कितना बढ़ा है या फिर यील्ड कितना बढ़ा है. ठीक है. एंड देन देयर इज वन मोर टैब कॉल्ड एज परसेंटेज शेयर इन इंडिया. तो टोटल 100% प्रोडक्शन जो इंडिया में हुआ है, राइट, उसमें से कौन से स्टेट ने कितना कंट्रीब्यूट किया है इन टर्म्स ऑफ the actual value. So out of 100%, let us say 10% contribution was from Punjab, 11% was from Madhya Pradesh, and then there are all the other states. Uttar Pradesh has contributed close to 18% in terms of production, in terms of total India level production, right. तो ऐसा कुछ आपको एनालिसिस करना है in terms of APY, ऐसा कुछ आप कंपैरिजन भी यहाँ से कर पाएंगे. ठीक है. So these three tips are there. This will be available almost in all the reports. Right. Now, you want to understand, for example, in we are looking at 1920 data, but मुझे 1920 का comparison नहीं करना है, मुझे उसके पहले के साल का कोई comparison चाहिए. तो उस केस में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेनू दिया है जहाँ पे सपोज मुझे देखना है अभी I want to compare all the states for 2017-18. 17-18 में क्या APY था, एरिया प्रोडक्शन यील्ड था, राइट. तो उस केस में आप यहाँ पे ये कंपैरिजन देख सकते हैं. ठीक है. The only thing is you need to remember you are looking at 2017-18 data, and for India you are comparing all the India states, right. उसके बाद में आपको चाहिए, for example, अभी आपको देखना है कि we have looked at time series of India, we have looked at states of India, state wise comparison हमने देख लिया है. ठीक है. अभी हमको चाहिए कि मुझे डिस्ट्रिक्ट वाइज परफॉर्मेंस देखना है, डिस्ट्रिक्ट वाइज कौन से स्टेट में क्या अभी प्रोडक्शन हुआ है. So in that case, I can simply click here on districts of India. ठीक है. तो यहाँ पे सपोज अभी आपको देखना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में क्या प्रोडक्शन हुआ है, या फिर आपको इसमें स्पेसिफिक सिलेक्ट करना है कि मुझे मध्य प्रदेश के हर एक डिस्ट्रिक्ट का ही डेटा देखना है, राइट. सो आई कैन सिलेक्ट मध्य प्रदेश as a state, right, and then only Madhya Pradesh district comparison will come. Or maybe you can select any state. I'm just randomly selecting some, right. तो इसका ये है 13-14 का डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा दिया है. गवर्नमेंट ने जब भी जो साल के लिए जो डेटा रिलीज किया है तब तक का ही हमारे पास यहाँ पे डेटा मिलेगा. बिकॉज यू हैव टू रिलाई ऑन दिस डेटा, सो वी विल नॉट कैप्चर फ्रॉम एनी अनऑथेंटिक सोर्सेस, राइट. तो यहाँ पे आपको ऐसा अभी ड्रॉप डाउन में भी फिर से देखना है तो पास्ट का ही डेटा आप दूसरा देख सकते हैं, राइट. नाउ देयर इज वन मोर मेनू, लाइक एक फीचर है फुल स्क्रीन मोड. अगर आपको कई बार ऐसा होगा कि एक साथ एक ही स्क्रीन में नहीं दिख रहा है, राइट, सो यू कैन आल्सो यूज दिस फुल स्क्रीन मोड एंड कैन एडजस्ट द फुल स्क्रीन मोड एज वेल, राइट. सो दिस इज व्हाट इज देयर इन प्रोडक्शन tab, right.
जैसे हम स्टेट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज सिलेक्ट वहां से कर रहे थे, ऐसा सेम आप यहाँ से भी करके जा सकते हैं. यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट यू वांट खरीफ सीजन डेटा और रबी सीजन डेटा. ठीक है. देन यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एग्रीकल्चर इनपुट, क्या क्या इंडिकेटर्स अवेलेबल है एग्रीकल्चर इनपुट्स में, राइट. तो वो इनपुट्स का भी आपको डेटा यहाँ से मिल जाएगा. ठीक है. फॉर एग्जांपल यू वांट टू लुक एट फर्टिलाइजर कंजम्पशन डेटा, राइट, और मे बी सम अदर इंडिकेटर्स, लैंड यूसेज स्टैटिस्टिक्स, राइट. सो दैट वुड बी अवेलेबल हियर इन इनपुट्स टेब. उसमें भी आपको देखना है कि प्रोग्रेस ऑफ रेनफॉल कैसे हो रहा है. ठीक है. सपोज आपको साउथ वेस्ट मानसून देखना है, उसमें वीकली प्रोग्रेस आपको देखना है, तो वीकली प्रोग्रेस के लेवल का डेटा हम कलेक्ट करते हैं, राइट. उसके अलावा आपके लिए इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है विच इज कॉल्ड एज रिजर्वोयर लेवल, राइट. तो सपोज मुझे देखना है कि ऑल अक्रॉस इंडिया में अभी रिजर्वोयर लेवल बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो वो सब इंडिकेटर्स आप यहाँ से देख पाएंगे. तो सपोज हमारे पास रिजर्वोयर्स बढ़े हैं, कम हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो हमारे पास 1970 से लेके अभी तक का 2021 तक का डेटा अवेलेबल है, राइट. तो अभी वी हैव good reservoir level like 130 reservoirs are there. So these are the monitored reservoirs, and then you want to see full reservoir level that is given. Current reservoir level live storage is given, right. So this is what you can go into each and every report and you can analyze what is happening with the reservoir level, or maybe you want to see weekly progress of the rainfall. Say for example, I want to look at southwest monsoon, for example. Right. So what is the long period average, what is the deviation from long period average, and what is the actual rainfall, right. So this all data will be available here quickly. And so it is up to you which indicator you want to select for what frequency. You can select any frequency data. Then you want to look at data related to season wise fertilizer consumption. ठीक है. कौन सी सीजन में कितना फर्टिलाइजर का कंजम्पशन हुआ है. ठीक है. तो आपको एनपीके वाइज आपको चाहिए कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, राइट. तो आपको यहाँ पे जो भी क्लासिफिकेशन है, अभी यहाँ पे कुछ टेब्स बढ़ गए हैं, आप देख सकते हैं. एक तो एब्सोल्यूट वैल्यू से एक्चुअल कंजम्पशन इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम केजीस, यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी दिया हुआ है, राइट. तो फ्रॉम 68 टू 1617 ये डेटा रिलीज किया है गवर्नमेंट ने. तो टोटल कंजम्पशन कितना हुआ, उसमें से नाइट्रोजन और फास्फोरस का और पोटेशियम का सबका कंजम्पशन कितना हुआ है, राइट. वो सीजन वाइज आपको डेटा मिल जाएगा. इसके अलावा आपको चाहिए कि वाई परसेंटेज चेंज वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड कि कितना कंजम्पशन बढ़ा है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर. देन देयर इज अ टेब कॉल्ड एज परसेंटेज शेयर इन टोटल, जो अगेन आउट ऑफ 100% प्रोडक्शन कंजम्पशन जो हुआ है, राइट, उसमें से कौन से टाइप में ज्यादा कंजम्पशन हुआ. सो फॉर एग्जांपल इन दिस केस इन 68.9 67% was from nitrogen consumption, then phosphorus and potassium, right. But if you want to understand कि अभी का क्या सिचुएशन है, स्टिल अभी तक अपना नाइट्रोजन का कंजम्पशन ही ज्यादा है, then comes phosphorus and then potassium, right. So ये आप अलग हिसाब से अपने हिसाब से एनालाइज कर सकते हैं. Then comes another tab called as percentage share in subtotal. अभी सबटोटल क्या है, तो टोटल आउट ऑफ 100% जो कंजम्पशन हुआ है फर्टिलाइजर का, तो उसमें से फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल कंजम्पशन है 100, उसमें से 47% कंजम्पशन किसमें हुआ है, खरीफ सीजन में हुआ है, और 52% कंजम्पशन कब हुआ है, रबी सीजन में हुआ है, राइट. सिमिलरली नाइट्रोजन का देखना है आपको, फास्फोरस या पोटेशियम का देखना है, तो आपको इंडिविजुअल फर्टिलाइजर टाइप के वाइज भी आप देख सकते हैं यहाँ पे. एंड देन परसेंटेज शेयर इन इंडिया, तो उसमें आपका अगर कुछ डेटा है अवेलेबल कि भाई इंडिया के लेवल पे अगर कुछ डेटा दिया है हमारा, राइट, तो वो डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा. ठीक है. देन यू वांट टू लुक एट सम मार्केट सरप्लस रेशियो. ठीक है. तो मार्केट सरप्लस रेशियो इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स क्या है, कितना प्रोडक्शन है, राइट, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं. ठीक है. So apart from this,
So this is all related to the agriculture input, right? Again, you can select time series or state-wise or district-wise. I can take all this, right? But you know now that we have seen time series. अगर आपको switch करना है, एक और इंडिकेटर आपको दिखा देता हूँ. तो suppose कोई स्पेसिफिक इंडिकेटर अभी हम देख रहे हैं, जैसे कि हम स्टेट-वाइज कुछ डेटा देख रहे हैं, राइट? और फॉर एग्जांपल लैंड यूसेज यहाँ पे हम ले लेते हैं अभी. ठीक है, लैंड यूसेज में हम वी वर लुकिंग एट सम इंटरस्टेट कंपैरिजन, राइट? बट मुझे अगर गुजरात का टाइम सीरीज चाहिए तो वो केस में मैं क्या करूंगा? आई कैन नेविगेट डायरेक्टली फ्रॉम दिस स्टेट इंटरस्टेट कंपैरिजन टू गुजरात, which is GJ given here. So these are all the western states, these are the eastern states, these are the northern states, and these are the southern states, right? So in western states, if I select Gujarat, ठीक है, तो गुजरात का पूरा टाइम सीरीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा. सपोज आपको देखना है कि गुजरात में लैंड यूसेज कितना है, राइट? इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, रिपोर्टिंग एरिया, ग्रोस ओन एरिया, राइट? क्या वो बड़ा है, कम हुआ है, जो भी डेटा गवर्नमेंट ने रिलीज किया है, करेक्ट, तो वो आप यहाँ से देख पाएंगे. तो यहाँ पे रिपोर्टिंग एरिया कितना है, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया कितना है, फेलो लैंड वगैरह कितना है, करेक्ट. तो ये सब कंपैरिजन आप यहाँ से कर सकते हैं. अभी हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं टाइम सीरीज गुजरात का. So if you have selected some specific state or some district, in that case यहाँ पे heading में वो आ जाएगा. And even when you download this particular data into an Excel file, it will the heading will remain the same. Correct. अभी कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि एज एन रिसर्चर, लाइक हम काफी कुछ रिसर्च करते हैं, डेटा हम CMI से लेते हैं, राइट? तो वो केस में क्या हम सोर्सेस मेंशन कर सकते हैं? क्या हम मेंशन कर सकते हैं कि हमने ये कमोडिटीज डेटाबेस से लिया है? सो यस, यू कैन मेंशन कि हमने ये कमोडिटीज डेटाबेस से लिया है, या जो भी डेटाबेस आपको भी यहाँ पे सब्सक्राइब किया है उसमें से आपने जो भी डेटाबेस में से लिया है, that source you can absolutely mention, right? Okay, so I'm not going into these steps again, you know this now, so I don't want to spend much time on this. Okay, abhi okay, so this is commodities. So we have seen inputs, we have understood what is the land usage. Then there are some other indicators like net irrigated area and sources of irrigation, right? Clockwise gross irrigated. So you can go through this particular indicators as per your convenience. Then comes last step, which is called as forecast. Forecast में क्या रहेगा? Forecast में अगर आपको समझना है कि फॉर एग्जांपल अभी नेक्स्ट 5 years का अभी APY का सिचुएशन क्या लग रहा है, so based on some past data we give forecast. तो अगर आपको forecast दिखना है तो you can scroll down, आपको यहाँ पे जो भी रेड में नंबर दिखेंगे, दिस ऑल नंबर आर फोरकास्टेड नंबर्स. अनलेस एंड अनटिल गवर्नमेंट एक्चुअल डेटा रिलीज करते हैं तब तक ये डेटा यहाँ पे फोरकास्टेड डेटा रहेगा, ठीक है. सो द ओनली थिंग व्हिच यू नीड टू रिमेंबर इज, जब भी आपकी डेटा एक्सेल में डाउनलोड कर रहे हैं, राइट, तो ये नंबर्स वहाँ पे रेड में नहीं दिखेंगे. तो यू हैव टू जस्ट मेंशन कि या फिर यू हैव टू रेड मार्क दिस नंबर्स. जब आप एक्सेल में इसको कर रहे हैं तो आप कुछ हाईलाइट कर दीजिए इसको कि ये फोरकास्टेड नंबर्स है, so that आप कुछ इस पे काम करें वो डेटा पे, तो आपको भी ध्यान दे रहे हैं कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये डेटा फोरकास्टेड डेटा था, ठीक है. सो दिस इज व्हाट नेक्स्ट 5 years फोरकास्ट. सो कितना बढ़ेगा नेक्स्ट ईयर, प्रोडक्शन बढ़ने वाला है, क्या फोरकास्ट है CMI का, राइट? दिस इज इंडिपेंडेंट फोरकास्ट, दिस इज नॉट गिवन फ्रॉम द गवर्नमेंट, राइट? दिस इज द CMI's own फोरकास्ट, ठीक है. तो हम बोल रहे हैं कि आवर प्रोडक्शन ये 2021 का ये था जो बढ़ने वाला था, और अभी ये साल का प्रोडक्शन कम होगा, correct? So based on some past trends, past data with support of some facts and figures, we forecast this data, ठीक है. While I'm explaining this, अगर आपका किसी का भी कुछ क्वेश्चन आ रहा है, you have some doubts, you need some clarity, right? Please write it in the chat box. I don't know, like directly मेरे पास क्वेश्चन आ सकते हैं, नहीं आ सकते, but my colleague Parth is also there, so he can just look at those questions and we'll try to respond as early as possible. Shraddha ma'am is also there, and I think Yogesh sir and other team members will also join soon once their meeting is over. Great. So I think we have covered this part, like the navigation part, the actual data part. हमको अभी ये समझ में आ गया कि data extraction is very simple. Just select
a time series or maybe a state or maybe a district, and just select appropriate indicator list and download the data. Okay, so it is that simple. बट अभी कमोडिटीज में देयर इज मोर टू इट. अगर आपको समझना है कि फॉर एग्जांपल ये डेटा है, उसमें स्पेसिफिक कमोडिटी का मुझे डेटा चाहिए. जैसा मैं आपको यहाँ पे एक ट्री एक्सप्लेन कर रहा था, तो हमने क्या किया, यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिया है फूड ग्रेन, नॉन ग्रेन फूड क्रॉप्स, देन नॉन फूड एग्रीकल्चर क्रॉप्स. Okay, so these are all agriculture related products. Then there are some other commodities as well. For example, I want to look at some minerals or maybe food products and beverages and tobacco related products, right? Or maybe some other products like non-ferrous metal and metal products, right? Then I want to look at some jute textile or something, or maybe some precious metal, correct? So for all these three, you can open other branches and you can select a specific commodity और उसका जो भी डेटा है वो डेटा आप देख सकते हैं. ठीक है. In terms of all these other commodities, you will be able to get the prices data, right? Because there are certain sources from where we collect this data. But आपके लिए ज़्यादा काम का है, which is more of a selection of agriculture commodities. जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ. यहाँ पे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ wheat. If I'm not very sure कि मैं अभी जो डेटा या मुझे जो commodities चाहिए उसका डेटा यहाँ पे है कि नहीं है, right? तो उस केस में आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं. Right? So for example, so if you just search oil, okay, so it will navigate me to the oil or whatever indicator search I would have done. Okay. Okay. Now let us continue with this wheat example. Let us select. So you can see when I click on wheat, यहाँ पे कुछ और टेब्स भी ओपन हो गए. अगर आपने wheat सिलेक्ट किया है तो आपको only related to that particular commodity उसका related जो भी न्यूज़ वगैरह आपको है वो यहाँ पे मिल जाएंगे. ठीक है. So suppose UP government is likely to break down wheat procurement target. This is tiding, right? तो भी गवर्नमेंट ने कुछ न्यूज़ रिलीज किया है तो आप वहाँ पे जाके फर्दर अंदर जाके देख सकते हैं. ठीक है. So you know tidings now. I'm not going into detail now, but production we have understood. यहाँ पे और जो प्रोडक्ट्स हम पहले देख रहे थे उसमें एक ही फर्क है कि अगर आप यहाँ पे कमोडिटी सिलेक्ट कर रहे हैं, राइट, और उसके बाद में यहाँ पे जा रहे हैं प्रोडक्शन में, तो उस केस में यहाँ पे आपको स्पेसिफिक कमोडिटी का ही प्रोडक्शन दिखेगा. करेक्ट. हम पहले क्या देख रहे थे, फूड ग्रेन देख रहे थे. फूड ग्रेन में हम टोटल फूड ग्रेन का ऑल ओवर इंडिया का प्रोडक्शन देख रहे थे, राइट. बट अभी हमको यहाँ पे स्पेसिफिक चाहिए कि व्हीट का ऑल सीजन्स का कितना हमको प्रोडक्शन हुआ है, राइट. तो वो केस में आप स्पेसिफिक डेटा भी यहाँ पे देख सकते हैं. इसके अलावा आपको देखना है कि सपोज अभी ये प्राइसेस वगैरह टेप्स पहले नहीं थे. प्राइसेस है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन एंड फॉरेन ट्रेड. दिस टेप्स वर नॉट देयर अर्लियर. तो अभी हमको सपोज समझना है कि ये पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइसेस का क्या सिचुएशन है, राइट. तो हम क्या करते हैं, वी कलेक्ट डेली बेस्ड डेटा. So we have a dedicated team who calls all these mandis, all these dealers, and we try to understand कि अभी आज का मार्केट का प्राइस क्या, आज कितना अराइवल है, राइट. तो अभी हमारे पास 2 फ्रीक्वेंसी का डेटा है. कुछ कमोडिटी जैसी होगी जिसका हम शायद मंथली ही प्राइस कॉल कर सकते हैं, राइट. तो ऐसा वो मंथली फ्रीक्वेंसी में भी आपको डेटा मिलेगा और बाकी आपको यहाँ पे डेली फ्रीक्वेंसी का तो ऑलमोस्ट सभी कमोडिटी का डेटा मिलेगा. ठीक है. अभी आपको क्या करना है, यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन आइदर ऑफ द फ्रीक्वेंसी. डेली कर लीजिए या फिर मंथली कर लीजिए. सपोज मैंने अभी यहाँ पे डेली पे क्लिक किया है. उस केस में मेरे पास क्या आएगा, ये एक टेबल जो मैंने क्लिक किया था, उसके बाद में यहाँ पे आपको यहाँ पे डेट दिख रहा होगा कि यहाँ से लेके मेरे पास अभी का जो व्यू है, ये जो पेज मुझे दिख रहा है, तो वहां से ये 1 साल का टाइम सीरीज आपको यहाँ पे दिख रहा है. सो यू कैन आइदर क्लिक ऑन दिस टाइम सीरीज. तो यहाँ पे क्या है डेटा, there are 2 data points. One is prices और दूसरा है अराइवल. प्राइसेस में क्या रहता है, प्राइसेस में हर एक कमोडिटी वाइज में हमने व्हीट सिलेक्ट किया है तो व्हीट का प्राइस डेली बेस पे मिलेगा आपको. देन सो दैट इज रुपीज क्विंटल, रुपीज पर क्विंटल, एंड देयर इज परसेंटेज पीओपी चेंज, दैट इज पीरियड ओवर पीरियड चेंज. लास्ट दिन की कंपैरिजन में एक दिन में कितना प्राइस बढ़ा है या कम हुआ है. And then YOY percentage change, which is 15 July 21 is compared with
15 जुलाई 2020, तो एक साल में ये पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस क्या बढ़ा है या कम हुआ है, राइट। देन कम्स अराइवल्स। सेम अराइवल में भी कितना अराइवल हो रहा है, राइट। तो सपोज कितने टन्स का अराइवल है वो हमको देखना है और उसमें कितना चेंज हुआ है एज कम्पेयर टू प्रीवियस डे, राइट, और प्रीवियस पीरियड। अगर आपने मंथली सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे पीओपी परसेंटेज चेंज, इट मींस कि लास्ट पीरियड जो आपका है, लास्ट पीरियड वुड बी मंथली इन दैट केस, तो उसमें कितना चेंज हुआ है, राइट। अभी आपको जहां पे भी ब्लू लिंक्स दिख रही है, इट मींस कि वो लिंक्स पे आप फर्दर क्लिक कर सकते हैं और अलग टाइप के जो वेराइटीज है वो वेराइटीज में आप ये डेटा देख सकते हैं। सपोज अभी आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल आई वांट टू लुक एट लास्ट डेज प्राइस, आई गो टू दिस लिंक, ठीक है। वीक में भी अलग अलग वेराइटी रहते हैं, राइट, तो वो अलग वेराइटीज के हिसाब से हमको डेटा देखना है, राइट। जैसा कि ये एवरेज इज वन ऑफ द टाइप, बंसी, सी ग्रेड, राइट, देसी, कल्याण, लोकवन, राइट। So all the other types, each and every types of wheat is given here. अभी इसके भी अलग सोर्सेस हो सकते हैं, जैसे कि आपको काफी लोगों को पता होगा डिजीमार्केट इज आल्सो वन ऑफ द सोर्स, CMI आल्सो वी पोल वेरियस प्राइसेस, तो हमारे भी कुछ सोर्सेस से डेटा हम कलेक्ट करते हैं, करेक्ट है। जो भी सोर्स है, सपोज NCDX का कुछ डेटा है तो NCDX को भी आल्सो मेंशन सोर्स के ये कौन से सोर्स से क्या डेटा कलेक्ट किया हुआ है, राइट। अभी इसमें आपको फर्दर सपोज मुझे देखना है कि कोई स्पेसिफिक स्टेट का या डिस्ट्रिक्ट का अभी का वीट का परफॉर्मेंस क्या है। फॉर एग्जांपल मुझे देखना है कि गुजरात में अभी क्या प्राइसेस चल रहे हैं, सो आई कैन फिल्टर अ स्पेसिफिक स्टेट, फॉर एग्जांपल आई सिलेक्ट गुजरात, गिव ओके, ठीक है। तो वो क्या करेगा, गुजरात के जितने भी मार्केट्स हैं, अभी आपको ऑलमोस्ट आपको सबको पता होगा इतने मार्केट्स में वीट का ट्रेडिंग होता है, ठीक है। अमरेली है, अमरेली में भी अलग अलग मार्केट है, बगसरा है, राइट, साबरकाठा में बिलोड़ा है, भावनगर में बोटाड है, राइट। तो दिस आर द मार्केट्स, दिस आर द डिस्ट्रिक्ट्स, राइट। उसमें आपको देखना है कि अभी कौन सी, अभी ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक मार्केट में हर एक टाइप का वीट ट्रेड होता हो, राइट। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सुरेंद्रनगर के चोटिला में स्पेसिफिक वेराइटी जो कि लोकल है वो वहाँ पे ट्रेड हो रहा है, ठीक है, बट लोकल लोकवन अभी वो पर्टिकुलर मार्केट में ट्रेड नहीं हो रहा है। तो आपको देखना है कि कौन से पर्टिकुलर मार्केट में क्या ट्रेड हुआ था और उसका टाइम सीरीज देखना है फर्दर। सपोज मुझे देखना है कि लोकवन का अमरेली मार्केट में, लेट अस लुक एट बगसरा सो दैट यू विल अंडरस्टैंड बेटर, बगसरा में उसका क्या प्राइस था, उसका टाइम सीरीज चाहिए, राइट। तो आप यहाँ पे फर्दर क्लिक करेंगे, ये जो ब्लू लिंक है उसके ऊपर, तो उसका 1677 उसका लेटेस्ट प्राइस था। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वीट लोकवन बगसरा, उसका पूरा टाइम सीरीज आ गया, एक साल का डेटा आपके पास आ गया, ठीक है। अभी कई बार ऐसा होगा कि मुझे एक साल का नहीं उससे ज्यादा का चाहिए डेटा डेली बेस पे, राइट। तो आई कैन चेंज द ईयर, फॉर एग्जांपल आई वांट टू सिलेक्ट फ्रॉम 2019 ऑनवर्ड्स, ठीक है। आई वांट इट फ्रॉम 15th ऑफ जुलाई 2019 टू 21, आई जस्ट सिलेक्ट, उसके बाद में यहाँ पे रिफ्रेश दे दूंगा, ठीक है। सो अभी मेरे पास 19 से लेके अभी तक का जो भी साल मैंने सिलेक्ट किया है या जो भी है उसका वहां से ये डेटा मेरे पास आ जाएगा। नाउ देयर इज वन मोर अल्टरनेट टू दिस, इज समथिंग कॉल्ड एज डाउनलोड एज डेटा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे ये एक्सेल डाउनलोड नहीं करना है, बट आपको देखना है कि जब से ये पर्टिकुलर मार्केट का प्राइसेस अवेलेबल है या डेटा अवेलेबल है, वहां से लेके अब तक का मेरे पास पूरा डेटा का डंप एक टेक्स्ट फाइल में आ जाना चाहिए। तो वो केस में आप क्या कर सकते हैं, यू कैन सिंपली क्लिक हियर ऑन दिस txt file, this download as data option, and it will get downloaded into a txt file. यहाँ पे आप ये डेटा जाके फर्दर देख सकते हैं, ठीक है। So similarly you can look at various data options, you can find various prices of various commodities, agriculture commodities, non-agriculture commodities are also there, right? And similarly you can use this particular, just a minute, give me a minute, it is not responding because it may take time to download this particular data, right? So so this is how you can select various commodities, you can select prices of various commodities, and accordingly you will be able to get data for all these indicators. Okay, apart from this जैसा हम डिस्कस कर रहे थे कि प्राइसेस का डेटा है हमारे पास, उसके अलावा क्या डेटा रहता है,
अराइवल का भी डेटा है कि हर एक मंडी में कितना प्रोडक्ट्स का अभी मंडी में आ रहा है, वो प्रोडक्ट अराइवल कितना है, राइट? तो अराइवल का भी आपको डेटा यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है? So you can look at all this data, all those indicators you want to select, and appropriately will be able to get all the time series data from commodity database, right? So this is there. Further, if you want to understand कि मुझे समझना है कि अभी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कमोडिटी वाइज कितना हो रहा है, करेक्ट? तो वो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट will also be you will also be able to get. Just give me a minute. I think there is some problem with this, so let it get resolved, and then we'll continue. Till that time, if you have certain queries, questions, I'll be glad to take up those questions and queries. Shraddha ma'am, any questions from students? Yes, there is one question. The question is how survey had done in COVID and lockdown time, and how it will be done in if any kind of situation arise. How, if you can ask, if you can repeat. How survey? Okay. Survey, yeah. Okay. Okay, ma'am. So, yeah, if it is related to survey, I think Kaushik sir would be the better person, but still I will answer whatever I know, right? So, for example, if I would like to understand कि भाई pandemic की वजह से या because of this lockdown, what was there in sir, what was happening in the survey, right? I'll just share my screen again. Give me a minute. Okay, तो हमने क्या किया कि we switched to telephonic survey, right? During the lockdown, because it was not possible for us to go there, go to the households and get their details, right? But as we know, most of the households since years, so they were also welcoming us in terms of responses in terms of telephonic survey, right? So we got responses from some of the telephonic surveys. But still, I'll connect with Mr. Kaushik Krishnan if you are really keen to understand what we have done during the time of lockdown, right? And any other questions? And if you want to understand that, what was the performance, like what was the income level change, right, during lockdown, or maybe what was the change in sort of various expenditures, right? So the necessity products were definitely sold, but उसके अलावा भी आपको देखना है कि कौन सी प्रोडक्ट पे लोगों ने खर्चा करना कम कर दिया है या कर दिया था उस टाइम पे, राइट? तो वो केस में आप क्या कर सकते हैं कि यू कैन लुक एट दोस पर्टिकुलर डेटा. हमारे पास 2014 से लेके अभी तक का सारा डेटा अवेलेबल है, तो आप वो सारा डेटा जो हमारा CPHS डेटाबेस है उसके अंदर अवेलेबल है, करेक्ट? यू कैन लुक एट दोस टाइम सीरीज डेटा. आपको अगर फर्दर इंटरेस्ट है, सो यू कैन go to this site called as consumerpyramidsdx.cmi.com. It's an open site. Anyone can go and check what sort of data is available. You can look at some of the analysis जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? So we write some articles. Our CEO and MD, Mr. Mahesh Vyas, he himself writes many articles on this. But if you want to understand in much detail, you can go to this how we do it section. तो आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा. What is our say survey design and sample and everything. Questionnaire. You can also get data capture screen, right? So what sort of data do we capture, and the specific screens, what sort of data is captured. You can look at all this description of indicators. ठीक है? Household wise क्या-क्या data हम capture करते हैं, income में क्या कर रहे हैं, expenditure में क्या कर रहे हैं. Right? So maybe you can I'm just trying to share whatever is available freely. हाउसहोल्ड का मंथली एक्सपेंडिचर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे 19 की कंपैरिजन में अभी 21 में क्या चेंजेस है, राइट? ऐसा आपको कुछ सीरीज वाइज, बिकॉज दिस इज द पैनल सर्वे एंड दिस वी कंडक्ट एवरी 4 months. We go to same household every month and we try to get the data. So this is 23rd wave which is going on. So every 4 months is one wave. So this is 23rd wave which is going on, right? So maybe you can just go through this how we do it section, and you can look at some of the other papers which we have published, and you can also attend some of the webinars if you want to attend.
Right? So there was one webinar which was yesterday by Shri Arvind Subramanian, who was Chief Economic Advisor to Government of India. Right? So you can find the links of the past surveys. You want to understand what we have covered in some of the past waves, right? So you can go through this. Right, but as of now, our focus is not that. So I'll not go into much detail. This is just for your information. Right, I hope I'm able to answer, but to be specific, you can post any of the queries on our email IDs. I'll also share our email IDs, and I'll also share one of the options in this database only. तो आप वहाँ पे भी जाके कुछ queries अपने post कर सकते हैं. Shraddha ma'am, any other questions related to No, sir. There is no question from this side, like from participants. So yeah, are we done? Like, yeah, you. Is there any? Yeah. So we have one more. Like. Okay. Okay. So the duration is like till 4:30. We have. 4:30. Yeah. Yes, sir. So I've almost covered one database, which is commodity. Okay. Right? Okay. Yeah. So I was just talking about this prices, daily frequency we had selected, and we have seen like कि कौन सी prices पे हम जाएंगे, कौन से specific market में जाके हमको देखना है डेटा, तो हम यहाँ से सिलेक्शन करके उसमें फर्दर जाके उसका भी टाइम सीरीज डाउनलोड कर सकते हैं. दिस फाइल यू कैन डाउनलोड इफ यू वांट सम फास्ट टाइम सीरीज डेटा. और जब से यहाँ का इसका टाइम सीरीज डेटा अवेलेबल है, उस पर क्लिक करेंगे तो पूरा डेटा आपका आ जाएगा. ठीक है. स्टूडेंट्स, अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेरीज है, प्लीज फील फ्री टू आस्क. ठीक है, because I think this is the most important database in terms of agriculture data. आपके काफी सारे स्टूडेंट्स के रिसर्चर्स के लिए भी ये इतना ही इम्पोर्टेंट है कि आपको समझना है कि भाई अभी क्या है, एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है एग्रीकल्चर सेक्टर का. राइट, सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द यूनिक डेटाबेसेस ऑफ CMI. बाकी यू विल गेट सम डेटा, से फॉर एग्जांपल कंपनी लेवल कुछ लिस्टेड कंपनीज है तो दैट इज अवेलेबल इन ओपन सोर्स, बट द नॉन लिस्टेड कंपनी वेयर आर कोर एक्सपर्टाइज इज, वो डेटा सिर्फ CMI से ही आपको मिल सकता है. ठीक है, अभी ठीक है. सो वी हैव डिस्कस्ड प्राइसेस. सिमिलरली यू कैन आल्सो लुक एट द अराइवल पार्ट, कि कोई भी स्पेसिफिक कमोडिटी, जैसे हम यहाँ पे वीट ले रहे थे, तो वीट में अभी अराइवल कितना है. फर्दर इफ आई क्लिक ऑन ब्लू लिंक आई विल गेट ऑल दिस डेटा. तो कौन से मार्केट में कितना अराइवल है. ठीक है, so this is in tons, like 105.6 tons इसका अराइवल है. This is the other market, right? तो ऐसा आप सिलेक्ट कर सकते हैं either prices और अराइवल डेटा यू वांट टू सिलेक्ट. ठीक है, इसके अलावा इनपुट्स में हमने जैसा अभी डिस्कस किया था, सेम डेटा इज देयर, बट हमने स्पेसिफिक कमोडिटी सिलेक्ट किया है. यहाँ पे वीट सिलेक्ट किया है, तो वीट प्रोडक्शन के लिए लैंड यूसेज का स्टैटिस्टिक्स क्या है, राइट, या उसके लिए फर्टिलाइजर कंजम्पशन वगैरह क्या है, ऐसा स्पेसिफिक कमोडिटी वैसा आपको चाहिए तो आप इसमें जाके वो डेटा देख सकते हैं. ठीक है, सो आई एम नॉट गोइंग टू दिस, वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस. अभी इसके अलावा हमको समझना है कि व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन. ठीक है, तो जो MSP डिराइव करते हैं, राइट, तो MSP के लिए आपको जो भी इंडिकेटर्स चाहिए, राइट, फॉर एग्जांपल A2 + FL आपको चाहिए, जो भी इंडिकेटर्स इसके बेस पे बेसिकली गवर्नमेंट डिसाइड करती है. सो ऑल दोस इंडिकेटर्स रिलेटेड टू MSP इज अवेलेबल हियर. ठीक है, A2 + FL का टोटल कॉस्ट कितना है, राइट, हायर लेबर कितना है, इम्प्यूटेड फैमिली लेबर कितना है, ऑन लेबर कितना है, सीड्स, इंसेक्टिसाइड्स. Right, so this is the total cost which is given here in terms of tenant farmer, right, that is family labor and including included video labor. Correct. So this is what you will be able to get all the indicators related to cost of cultivation. Again, time series for state is also available, so you can look at those state-wise data as well. If you want to look at comprehensive cost incurred by farmer, you can select that. ठीक है, सो टोटल कॉस्ट कितना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, हायर लेबर, ऑन लेबर, तो सामने वो क्लासिफिकेशन देखा था, राइट. तो उसमें रेंटल वैल्यू ऑफ ऑन लैंड कितना है, रेंट पेड टू सम लीज लैंड, राइट. तो ऐसा डेटा भी आपको यहाँ से मिल जाएगा. ठीक है, ओके. नाउ कमिंग टू द लास्ट केस फॉर स्पेसिफिक कमोडिटी व्हिच इज फॉरेन ट्रेड, राइट.
you can do two things. You can get commodity-wise export and import data from this particular database, or else if you want to find the specific commodity by HS code, right? In that case, a TradeDX database would be useful to you, right? ताकि यहाँ पे HS code के wise आपको नहीं मिलेगा, but यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? आपने commodity select किया, suppose wheat है, तो wheat का monthly production, monthly export import क्या है, right? तो वो आप यहाँ से देख पाएंगे. Again, for both this classification, principal commodities and IT classification, दोनों classification के हिसाब से data यहाँ पे available है. उसमें भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी का डेटा है. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी कैन बी जो फ्रीक्वेंसी में डेटा अवेलेबल है, जैसे कि मंथली है, क्वार्टरली है, वीकली है, कई बार क्यूमुलेटिव भी होता है, डेली भी होता है. सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ फ्रीक्वेंसी. तो सपोज मुझे देखना है कि अभी इंडियन रुपी टर्म्स में कितना एक्सपोर्ट हो रहा है ऑफ प्रिंसिपल कमोडिटीज क्लासिफिकेशन. ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे मंथली पे क्लिक करूंगा. ठीक है, और उसका मंथली एक्सपोर्ट का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है, सो दिस इज इन रुपीज इन मिलियन. तो हमको देखना है कि कौन सी कंट्री को हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, राइट? तो वो आप यहाँ पे कंट्री वाइज देख सकते हो, या फिर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे वर्ल्ड टोटल वर्ल्ड को हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें से कंट्री वाइज कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं. सो एशिया में हम आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपोर्ट्स आर डन टू एशियन रीजन्स, राइट? और इफ यू वांट टू अगेन लुक एट सम ऑफ द कंट्रीज, राइट? तो कंट्री वाइज कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो कंट्री वाइज एक्सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे. वी आर एक्सपोर्टिंग गुड नंबर ऑफ wheat, right, to Nepal and some other countries. Okay, in Sri Lanka we are exporting. So Asian countries, as we have seen, so we are exporting the most to Asian countries, right? So country wise क्या export का scenario है वो आपको देखना है. Year on year change, period over period. यहाँ पे अगर हमने monthly frequency select किया तो लास्ट मंथ के कंपैरिजन में कितना उसका एक्सपोर्ट बढ़ा है, कम हुआ है, वो आप यहाँ पे देख पाएंगे. ठीक है. Similarly, you want to look at the data in terms of quantity. हमने क्या देखा यहाँ पे रुपीज in terms of value terms में हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं. अभी आपको क्वांटिटी टर्म्स में देखना है, तो आप क्वांटिटी पे क्लिक करेंगे. ठीक है, सो सपोज अभी आपको समझना है कि कितना हम in terms of यहाँ पे टर्म्स में दिया हुआ है, तो कितने टर्म्स का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं टू वर्ल्ड एंड टू द डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट रीजन्स, right? So here also you'll be able to get it here, right? So I think I have covered almost everything here in commodities database. इसमें specifically class step था जो हमने डिस्कस किया, but if you want commodity wise forecast, ठीक है, कि अभी ये पर्टिकुलर commodity wheat का प्रोडक्शन कैसा लग रहा है, नेक्स्ट फ्यू इयर्स में बढ़ेगा, कम होगा, क्या है, राइट? तो यहाँ पे स्पेशली commodity wise भी फोरकास्ट हम अवेलेबल करवाते हैं. These are the forecasts for wheat for next few years, right? Okay, so I think I have covered almost everything here. You have certain queries, questions related to commodity database, please let me know. There is an option called as SIG clarifications, right? Where you can interact with our team. So for example, आपको कोई ऐसा क्वेश्चन है कि सपोज अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल डेटा 13-14 तक का इतनी अवेलेबल है, राइट? व्हाई नॉट अप टू दैट? तो ऐसे कुछ भी क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ऑप्शन है डेटा अवेलेबिलिटी इन कमोडिटी डेटाबेस. ठीक है, सो यू कैन राइट योर मैसेज हियर दैट आई वांट दिस डेटा फ्रॉम दिस सीरीज. इफ इट इज अवेलेबल तो हमारी टीम आपको रिस्पॉन्ड कर देगी, ये ऑलरेडी अवेलेबल है. शायद आपको कई बार ऐसा भी होगा कि ये डेटा कहाँ से नेविगेट करना है पता नहीं है. दैट मींस यू कैन पोस्ट योर क्वेरी, यू कैन राइट इट हियर and you can post the query from here. So write a message and post the query here. जैसे आपको क्वेरी का रिवर्ट आएगा, आपको एक ईमेल भी आएगा कि हमने आपकी क्वेरी का रिवर्ट किया है, और आप जाके इसके अंदर जाके यहाँ पे तो इनबॉक्स है, उनके उसमें जाके आप देख सकते हैं कि आपको आपकी क्वेरी का क्या रिवर्ट आया. ठीक है. Similarly, if you have some other queries like related to some data presented, right, or if you have some other like articles related to commodities related issue, right, you can write it to our team, right? So this is going directly to the actual product managers, product heads who are working day in day out on this database, right?
So I think we are good to go to second database, right? And again, tomorrow we'll be covering 4 database. So we'll take a short break tomorrow. If you want 5 minutes break, I can take, or maybe we can continue with the session. Shraddha ma'am, should I continue? Yes, sir. Not an issue. We can continue. Okay, yeah. ठीक है. So I just want to make sure कि मैं जो टाइम दिया उसमें ये खत्म करूं और उनका एटलीस्ट उनको पता भी चले क्या डेटा अवेलेबल है. ठीक है. So okay, let us switch to the other database. Still, if you have some queries, questions, आप एक बार पोस्ट कर दीजिए. यहाँ पे आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं. श्रद्धा मैम will ask the question on your behalf to me. ठीक है. तो ये भी आप कर सकते हैं. Okay. Now coming to first source. Okay. So what is there in this first source database? Okay. कई बार ऐसा क्वेश्चन कुछ डेटा हमको चाहिए होता है कि जैसे कि फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन ऐसे कितने ऑर्गेनाइजेशंस है जो इंडिया में है, राइट? तो उसका कुछ डेटा चाहिए. या फिर आपको समझना है कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, राइट? उसके अंदर आपको कुछ स्पेसिफिक इंडिकेटर्स या उसमें कौन कौन सी कंपनी क्लासिफिकेशन है उसका हमको डेटा चाहिए होता है. तो वो केस में फर्स्ट सोर्स is I would say it is the first source for you to get all the data, right? अभी ये डेटाबेस के लिए सेम प्रोसेस है. You have to just log in using this credential. ठीक है. आपको यहाँ पे ये आपका जो भी यूजर नेम पासवर्ड है उसको यहाँ पे एंटर करके you have to submit. ठीक है. If you want to note down this particular URLs, ये जो हमारे like product names and .cmi.com is the URL for any selected database, right? And I think it will be available to your particular university library website soon, right? So you can also go there, or maybe you can go to CMI website. You will get URLs of all these databases. ठीक है. अभी ये database के अंदर क्या है? You want to find a specific company's data. In that case, you will be able to get all those. तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए. अगेन इज कंपेयर्ड टू आई वुड से commodities, this is the simplest form to extract data. You can select literally any company and you can download their data, right? So suppose अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ कंपनी इंफॉर्मेशन में. ठीक है. So कंपनी इंफॉर्मेशन में क्या होता है? You can literally select any company of your choice और उसके बाद में आपको चाहिए कि उसका मुझे डेटा देखना है, राइट? तो यहाँ पे क्या क्या डेटा अवेलेबल है? एक तो कंपनी के CIN वाइज भी आप सर्च कर सकते हो, LLP IN के वाइज भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो. ठीक है. तो सपोज मुझे अभी कोई स्पेसिफिक कंपनी देखना है. फॉर एग्जांपल आई विल टेक कैडिला हेल्थकेयर. यू कैन सिलेक्ट एनी कंपनी. आई एम जस्ट रैंडमली सिलेक्टिंग द कंपनी, राइट? अगर मैं यहाँ पे कंपनी का नाम एंटर करता हूँ तो उसका ड्रॉप डाउन में नाम आ जाएगा. If I just enter Kedila, ठीक है, तो Kedila के स्टार्टिंग नेम से जितनी भी कंपनीज है वो यहाँ पे अपीयर हो जाएगी. ठीक है. नाउ व्हाट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस डेटाबेस? यहाँ पे इंडिया की कोई भी कंपनी जो रजिस्टर्ड हुई है वो सभी कंपनी का आपको डेटा मिलेगा. सो ये डेटाबेस हमने कहाँ से क्रिएट किया है? सो वन सोर्स इज ROC, दैट इज रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, एंड सेकंड सोर्स इज MCA, which is मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जहाँ पे हर एक कंपनी जो अपना एनुअल रिपोर्ट फाइल करते हैं, राइट? तो वहाँ से हम ये डेटा कलेक्ट करते हैं और उसके केस में अगर आपको चाहिए तो हम क्या करते हैं? डेटा का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रखते हैं कि 4 साल का डेटा अगर वो आपको डाउनलोड करना है तो वो केस में आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. सो लेट अस लुक एट कि कैसे डेटा हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. तो सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ केडिला हेल्थकेयर. ठीक है. आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स कुछ ना कुछ कोई ना कोई कंपनी में काम करते होंगे, राइट? तो अगर आप कोई भी कंपनी का इंफॉर्मेशन अगर कोई पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है, राइट, तो आप ये सोर्स से आइए. यहाँ पे आप फर्स्ट सोर्स में आएंगे तो क्या होगा कि बेसिकली लिस्टेड कंपनी का डेटा शायद आपको कहीं से मिल सकता होगा, बट इंडिया में काफी सारी नॉन लिस्टेड, क्लोज टू 5000 कंपनीज ओनली आर लिस्टेड, राइट? उसके अलावा अगर टोटल कंपनीज में बोलो इंडिया में तो क्लोज टू 21 लाख कंपनीज है, विचार से लाइव कंपनी और एक्टिव कंपनीज, राइट? कोई कंपनी बंद हो गया होगा, कोई एक्टिव इन प्रोग्रेस होगा, ऐसी काफी सारी कंपनीज होगी, बट वो डेटा आपको शायद दूसरे डोमेन्स में कहीं से नहीं मिलेगा.
बट उसके लिए फर्स्ट सोर्स में पाएंगे आपको हर एक कंपनी का डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अभी सपोज हमने सिलेक्ट किया कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड, राइट, विच इज अ एक्टिव कंपनी। तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट फर्स्ट व्यू, यू वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि अभी क्या हो रहा है ये कंपनी का। फॉर एग्जांपल जो देखना है कि अभी उसका ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन कौन सा है, उसका लास्ट एनुअल जनरल मीटिंग कब हुआ था, कब उसके लास्ट बैलेंस शीट फाइल किए, कौन से आरओसी में ये कंपनी रजिस्टर्ड है, उनका ऑथोराइज कैपिटल, पेड अप कैपिटल, उन्होंने कौन से बिजनेस में अपना फाइलिंग किया है, दे आर इनटू मेटल, केमिकल एंड प्रोडक्ट्स thereof, right? You want to select, you want to see whether it's a listed company or not. So yes, this is a listed company. Why is listed? Whether it's a public company or a private company, so it's a public company, right? So similarly, all this first-hand information would be available here, correct? Now you can see like ये जो Zydus Group का company है, so Zydus Cadila जो हम बोलते हैं, और this is that company, right? तो उसका registered अभी का उसका एड्रेस कहाँ पर है, right? तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, and you will get email ID of the contact person, right? कई बार उनके CFO का email ID हो सकता है, उसकी कंपनी सेक्रेटरी का ID हो सकता है, maybe in terms of directors also you will get certain email ID. I think some cases you might need to approach those companies, you can contact on this email ID. ठीक है, अभी ये जो डेटा हम देख रहे हैं उसमें दूसरा हमारे पास, so we have seen first view, अभी हमको देखना है कि ये कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन कौन है, राइट? तो आपको सपोज यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे उसके बोर्ड मेंबर्स हैं, राइट? वी ऑल वुड बी नोइंग पंकज पटेल because they are also developing this vaccine for COVID-19, right? So and this is another director. So for example now यहाँ पे डेटा ऐसा भी है, पंकज पटेल दूसरी कौन सी कंपनीज में भी डायरेक्टरशिप होल्ड कर रहे हैं, राइट? तो उसके लिए मुझे अगर देखना है तो यहाँ पे ऑप्शन है व्यू डायरेक्टर्स डिटेल्स, ठीक है, उसमें मैं जाऊंगा तो अभी आप देख सकते हैं कि पंकज पटेल सर है वो बेयर ग्रुप साइंस में भी है, राइट, बेयर साइडस फार्मा में है, कैडिला लेबोरेटरीज में भी है, कैडकेम मशीनरी वगैरह में भी है, राइट? तो ये सभी जगह पे उनका डायरेक्टरशिप है, निर्मा में भी है, करेक्ट? साइडस हॉस्पिटल राजकोट वडोदरा अहमदाबाद, राइट? तो ये सारे कंपनीज में वो अभी डायरेक्टरशिप होल्ड कर रहे हैं, राइट? तो ऐसा आपको क्रॉस कंपनी डायरेक्टरशिप का अगर डेटा चाहिए तो वो केस में आप यहाँ पे जाके व्यू डायरेक्टर डिटेल्स सामने दिखा था, तो यहाँ पे जाके उस पर क्लिक करेंगे तो वो कोई भी डायरेक्टर है दूसरी कंपनी डायरेक्टरशिप होल्ड कर रहा है तो वो डेटा भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है? अभी इसके अलावा आपको डेटा चाहिए, फॉर एग्जांपल कुछ चार्जेस हम एसेस करना चाहिए व्हिच इज नॉट डायरेक्टली रिलेवेंट टू यू बट स्टिल यू वांट टू सी चार्जेस डेटा, तो यहाँ पे मिल जाएगा। So what is more important, तो ये ठीक है, this detail also maybe you will get somewhere, but what is not available anywhere, it is the picture value addition part जो हमने यहाँ पे दिया है। आपको देखना है कि ये कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेटा हमको देखना है, तो उस केस में हम आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में डेटा दे रहे हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल नाउ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि ये कंपनी का 4 साल का फाइनेंशियल क्या है, राइट? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस आर द स्टैंडर्ड फाइनेंशियल, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट, यहाँ पे आप 4 साल का इसका फाइनेंशियल डेटा देख सकते हैं, ठीक है? तो आपको उनका प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए, उनका बैलेंस शीट चाहिए, उनके ग्रोथ एंड रेशियो रिपोर्ट्स, फॉर एग्जांपल ये हम अभी देख रहे हैं वो है उनका प्रॉफिट एंड लॉस का डेटा, ठीक है? तो आपको सपोज देखना है उसका टोटल इनकम क्या है, उनके एक्सपेंसेस क्या है, उनका प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, राइट? तो ये सब आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मिल जाएगा। सिमिलरली वांट बैलेंस शीट डेटा ऑफ एनी गिवन कंपनी, एनी सिलेक्टेड कंपनी, राइट? सो दैट आल्सो यू विल गेट, ठीक है? तो ये उसकी लायबिलिटी एंड एसेट बेस पे सारा डेटा आपको मिल जाएगा, राइट? देन यू वांट टू अंडरस्टैंड कि उनके ग्रोथ और कंपनी का ग्रोथ क्या है, सेल्स ग्रोथ क्या है उनका, राइट? उनका प्रॉफिट ग्रोथ क्या है, नेट प्रॉफिट ग्रोथ क्या है, करेक्ट? तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसका रेवेन्यू 4.9%, क्लोज टू 5% का रेवेन्यू मार्च 20 में बढ़ा था, ठीक है? फिर उसका ऑपरेटिंग मार्जिन क्या है,
नेट मार्जिन क्या है. So these are few of the ratios. It may not be relevant directly to everyone, but कुछ specific students है वो कुछ say agriculture based companies है, right? जैसे कि मैं यहाँ पे देता हूँ अदानी विलमार फॉर एग्जांपल. ठीक है, कोई भी कंपनी सिलेक्ट करेंगे वो कंपनी यहाँ पे रहेगा. ठीक है, अभी इसका देखना है, मुझे कुछ डेटा देखना है. सो फॉर एग्जांपल आई वांट टू लुक एट सम कंसोलिडेटेड डेटा. तो कंसोलिडेटेड डेटा भी मिलेगा, बैलेंस शीट भी मिलेगा. ठीक है, उसके बाद में उसके ऑडिटर्स का डेटा भी मिल जाएगा, उसका रेटिंग्स भी मिल जाएगा, शेयर होल्डिंग पैटर्न मुझे देखना है. ठीक है, कि प्रमोटर का स्टेक कितना है, नॉन प्रमोटर का स्टेक कितना है, राइट. ये कॉर्पोरेट बॉडीज का मैक्सिमम स्टेक है ये कंपनी के अंदर, करेक्ट. तो ऐसे काफी सारे रिपोर्ट्स है. आपको कंसोलिडेटेड मींस उसकी सब्सिडियरी के साथ में उसका डेटा आपको एनालाइज करना है, करेक्ट. तो वो केस में आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके हिसाब से ऑटोमेटिक आपका रिपोर्ट आ जाएगा, करेक्ट. तो दिस इज देयर. आपको रेटिंग देखना है कि रेटिंग कंपनी का कई बार दिस इज आल्सो वन ऑफ द इंडिकेटर्स कि अभी कंपनी का ओवरऑल स्ट्रेंथ क्या है, उसका रेटिंग अपग्रेड हो रहा है, डाउनग्रेड हो रहा है, उसको कौन सी रेटिंग एजेंसी क्या रेटिंग दे रही है, कौन सा ग्रेड दे रही है, राइट. तो ऐसा आप रेटिंग का ग्रेड भी देख सकते हैं और अलग इंस्ट्रूमेंट से उसने जो रेटिंग दिया है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं. ठीक है. Then you want to understand. So these are the few of the standard reports. अभी कई बार ऐसा होगा कि आप जब लॉगिन कर रहे हो यहाँ पे आपने कोई कंपनी का नाम एंटर किया, राइट. उसके बाद में आई विल सिलेक्ट सम कंपनी. लेट मी शो यू दैट एज वेल. फॉर एग्जांपल तो कई बार कुछ रिपोर्ट्स फॉर एग्जांपल आपको इसके प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट वगैरह यहाँ पे नहीं दिख रहे, उसके रिपोर्ट नहीं दिख रहे. तो उसके इसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू प्लेस द रिक्वेस्ट टू प्रोक्योर लेटेस्ट डॉक्यूमेंट. ये ऑप्शन अभी मेरे पास इसमें अवेलेबल नहीं है, बट आपके लॉगिन में ये अवेलेबल होगा. यू जस्ट नीड टू क्लिक हियर. उसके बाद में एक कैप्चा आएगा, वो आपको एंटर करना है और उसके बाद में उसका डेटा आपके पास आ जाएगा. ठीक है. सो अभी ये दिस इज वन ऑफ द ऑप्शंस. अगर आपको देखना है कि इसका लास्ट डेट ये मगर कुछ डेटा है जो रिफ्रेश नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पे ये 21 जून 2021 तक का है, पर आपको देखना है इसके बाद में उसका कुछ एजीएम या कुछ हुआ है. यू कैन जस्ट क्लिक हियर ऑन रिफ्रेश, जस्ट एंटर दिस कैप्चा. तो उसके बाद में अगर कुछ मीटिंग या कुछ हुआ है उनका इसलिए है अपडेट्स, तो आपको यहाँ पे रिफ्रेश होकर आ जाएगा, अपडेट पे आ जाएगा. ठीक है. प्लस कई बार आपको ऐसा चाहिए कि कोई भी कंपनी है उसका आपको फुल एनुअल रिपोर्ट चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन है एक एनुअल रिपोर्ट्स का. यू कैन सिंपली सिलेक्ट दिस एनुअल रिपोर्ट. यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करने का आपके पास ऑप्शन हो जाएगा. ठीक है. तो आप यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है. सो दिस आर द फ्यू ऑफ द ऑप्शंस अवेलेबल वंस यू सिलेक्ट अ सिंगल कंपनी, और उसके बाद में उसका जो भी डेटा है वो आपको मिल जाएगा. ठीक है. So this is about selecting a single company and then extracting their data. अभी so this was their company information. इसके अलावा क्या होता है, there are options like search company, directors association, and then there are some requests if you have raised to our team. Okay. So suppose अभी मुझे सबसे पहले ऐसा समझना है कि कोई भी कंपनी है, राइट. सपोज मुझे उसके नाम, जैसा मैं आपको बता रहा था कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. ये स्पेसिफिक वर्ड्स है, ये स्पेसिफिक वर्ड्स जो भी कंपनी के नाम में आ रहे हैं, ऐसी कंपनी मुझे सर्च करनी है और उसमें मुझे स्टेटस वाइज चाहिए दैट आई वांट ऑल दोस एक्टिव कंपनीज जिसके नाम में फार्मर प्रोड्यूसर आ रहा है. तो वो आप यहाँ पे नाम लिख दीजिए या वर्ड्स लिख दीजिए, स्टेटस सिलेक्ट कर लीजिए एंड देन जस्ट सर्च. ठीक है. सो across India there are more than 10,785 companies which are having name like farmer producer organization. For example, ये आप देख रहे हैं सबसे पहला नर्सिंग फार्मर्स क्रॉप प्रोड्यूसर कंपनी. ठीक है. So each and every farmer producer, but their annual report format may vary, so you may get the annual reports if they have filed it properly. I think there is some format change
different from all the other companies in India, right? इनका थोड़ा फॉर्मेट अलग रहता है. तो आप एक बार अगर आपने डेटा सर्च किया तो यू विल बी एबल टू गेट ऑल दिस कंपनी. और यहाँ पे जो कंपनी के नाम पे आप क्लिक करेंगे, राइट, तो फर्दर उसका जो हम फर्स्ट वीडियो देख रहे थे उसमें वो नेविगेट कर देगा आपको. ठीक है. तो दिस आर द ऑप्शन. देन दूसरा सर्च का ऑप्शन क्या रहेगा आपके पास. ठीक है. एक बार ऐसा होगा कि आपको स्पेसिफिक सर्च करना है. आई डोंट वांट टू सर्च बाय से सम प्रोडक्ट नेम और समथिंग, right, or maybe by the pharma producer or something, right? But I want to find the companies based on, say, location, or maybe say based on classification. Suppose if I want to select the companies which are say in agriculture and allied activities, and if I want all those unlisted companies in agriculture and allied activities, right? So in that case I can select, ये मैंने नेचर ऑफ बिजनेस सिलेक्ट कर दिया. मुझे यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे. whether I want to select by Indian company, Indian LLP, right, or foreign company registered in India, foreign LLP, right, ऐसा कुछ भी ऑप्शंस है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं. देन यू वांट टू सिलेक्ट क्लास. अगर आपको चाहिए कि आपको इसका अलग अलग टाइप्स में, जैसे पब्लिक है, प्राइवेट है, प्राइवेट 1% कंपनी है, राइट, ऐसा कुछ आपको सिलेक्ट करना है तो वो केस में आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं. तो वेरियस सर्च ऑप्शंस आर देयर. देन कैटेगरी वाइज यू वांट टू सी द कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनीज और अदर्स, राइट. तो in that case you will be able to get this category wise data as well. ठीक है. फर्दर आपको सब कैटेगरी वाइज मींस आपको चाहिए कि इंडियन नॉन गवर्नमेंट कंपनीज अगर आपको चाहिए, राइट, तो ऐसा भी आप यहाँ पे सर्च, या फिर आपको चाहिए सब्सिडरी ऑफ सम फॉरेन कंपनी. ठीक है. तो ये ऑप्शंस भी आपको जो आपको चाहिए. मींस आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू सम ऑफ द ऑप्शन. यू कैन आइदर सिलेक्ट लिस्टेड और नॉन लिस्टेड और अनलिस्टेड एज वेल. अगर आपके पास स्पेसिफिक एनआईसी कोड है, राइट, तो फॉर एग्जांपल आपको समझना है कि भाई ये कोड में लास्ट जो 5 डिजिट वाले एनआईसी कोड है उसके लास्ट 5 डिजिट आपको एंटर करने. तो ये एनआईसी से लेके उसके बाद की जो भी कंपनी है, ये एनआईसी में जो भी फॉल करे वो सारी कंपनीज आपको चाहिए, राइट. तो वो इसमें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यू कैन एंटर सम एनआईसी कोड एंड देन यू विल बी एबल टू सर्च दोस कंपनीज. ठीक है. तो सपोज अभी हमने क्या सिलेक्ट किया, वी हैव सिलेक्टेड जस्ट वन थिंग. वी हैव टू थिंग्स टू बी स्पेसिफिक. वन इज अनलिस्टेड कंपनीज and second is nature of business, ठीक है, which is agriculture and allied activities. अभी आप यहाँ पे जो भी क्लासिफिकेशंस देख रहे हैं, these are the classifications. जैसा हमने देखा था केडिला हेल्थ केयर के केस में, तो उसका कौन सा क्लासिफिकेशन था, they are into manufacturing, metal and chemicals and drugs thereof. कोई भी कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में जो फाइल करेगी, एमसीए जो फाइल करेगी, आरओसी में जो फाइल करेगी, उसके हिसाब से उसने कौन से क्लासिफिकेशन, कौन सी इंडस्ट्री में वो काम कर रहे हैं, राइट. देयर विल बी सम कंपनीज व्हिच आर स्पेसिफिकली इनटू ट्रेडिंग, राइट. तो उन्होंने बोला कि मैं ट्रेडिंग में हूँ, करेक्ट है. तो उन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया होगा तो वो क्लासिफिकेशन के हिसाब से आप सारी कंपनीज यहाँ पे देख पाएंगे. तो लेट अस सिलेक्ट एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज. और उसके बाद में हमको अगर सिंपली सिलेक्ट करना है, सर्च करना है कि इसमें कौन कौन सी कंपनीज अभी फॉलो हो रही है. ठीक है. सो यू कैन जस्ट क्लिक हियर ऑन सर्च, राइट, और उसके बाद में आप यहाँ पे सारी कंपनीज देख पाएंगे. ठीक है. अभी यहाँ पे हमारे पास जो कंपनीज आ रही है वो सारी एक अलग स्टेटस वाली कंपनी है. हियर इज द स्टेटस अंडर लिक्विडेशन है, राइट. कुछ ट्रक ऑफ कंपनीज है, कुछ स्ट्राइक ऑफ कर दिए गवर्नमेंट ने, राइट, या फिर कुछ एक्टिव कंपनीज है. जैसे अलग जैसे कि कोई कंपनी है जो एलएलपी में कन्वर्ट हो गई है, राइट, तो उसका भी यहाँ पे स्टेटस आपको दिखेगा कि दे आर कन्वर्टेड टू एलएलपी. ठीक है. तो ऐसी हमारे पास जो भी लिस्ट है, सपोज आपको यहाँ पे मिल रहा है, आपने जो भी सर्च किए वर्ड्स उसके हिसाब से आपको कितना मिला, टोटल 65,342 कंपनीज मिला. अभी आप सपोज ये सारी कंपनीज का एक लिस्ट को आपको एक्सपोर्ट करना है इनटू अ CSV फाइल. यहाँ पे ऑप्शन है एक्सपोर्ट टू CSV and it will save all these companies list into a CSV file. ठीक है.
अभी इसके अलावा क्या क्या इसमें हमने क्या एक ऑप्शन दिया आपको कि यू वांट टू सी कि क्या क्या डेटा अवेलेबल है. सो वी हैव गिवन कंटेंट मार्किंग एज वेल कि अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कंपनी है, उसका स्टेटस है, कब इनकॉर्पोरेट हुआ था, उसका एड्रेस है, पिन कोड, ईमेल आईडी, स्टेट, फिर कौन से रजिस्टर आरओसी में वो रजिस्टर हुआ है, वेदर इट इज अ लिस्टेड कंपनी और नॉट, कंपनी टाइप सीआईएन रजिस्टर दिया है, ठीक है. नेचर ऑफ बिजनेस हमने सिलेक्ट किया एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज, तो ऑब्वियसली वही रहेगा. वेदर इट्स अ पब्लिक कंपनी और अ प्राइवेट कंपनी, ऐसे क्लास उसका आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है. आई जस्ट स्क्रॉल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर. ओके, क्लास दिया है, उसके बाद में कैटेगरी, ठीक है. सब कैटेगरी जो हमने पहले देखा था. अभी इसका एनआईसी कोड क्या है, तो ये एनआईसी कोड जो हम पहले वहां पे मैं आपको बता रहा था, यू कैन आल्सो सर्च बाय द एनआईसी कोड, राइट. और उसके बाद उसका ऑथराइज कैपिटल कितना है, पेड अप कैपिटल कितना है, उसने लास्ट कब एनुअल रिपोर्ट फाइल किया है. कुछ कंपनी तो ये कंपनी उसने 31 मार्च 14 में उसका एनुअल रिपोर्ट फाइल किया था, ठीक है. और उसका कब तक का एनुअल रिपोर्ट हमारे पास अवेलेबल. सो दिस इज कॉल्ड एज कंटेंट मार्किंग, क्या क्या कंटेंट हमारे पास अभी अवेलेबल है. तो उसके बाद में जैसा मैं आपको बता रहा था कि कुछ फाइनेंस रिपोर्ट अवेलेबल नहीं होंगे, राइट. तो उस केस में आपको क्या करना है, यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस बटन, ठीक है. वो बटन पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद में अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपका वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगा. दिस इज द बटन, यहाँ पे प्लेस रिक्वेस्ट टू प्रोसेस लेटेस्ट रिक्वेस्ट. तो हमारी टीम इसको प्रोसेस करके आपको उसका डेटा ऐसे फॉर्मेट में आपको दे देगी, ठीक है. तो अगर उसका फाइनेंस रिपोर्ट अवेलेबल है तो यहाँ पे वाई लिखा है, वाई मीन्स इसका फाइनेंस रिपोर्ट अवेलेबल है, इसका अवेलेबल है. बट ये जो दूसरी कंपनी यहाँ पे दी है उसका फाइनेंस रिपोर्ट अवेलेबल है, अतुल माइंस प्राइवेट लिमिटेड है, उसका डेटा हमारे पास अभी इस फाइनेंस रिपोर्ट अवेलेबल नहीं है, करेक्ट. अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो उसका भी डेटा आपके पास आ जाएगा. then there is a shareholding pattern का डेटा अवेलेबल है. in case yours it is available, it will be available as Y. डायरेक्टर से, ऑडिटर से, रेटिंग से, एंड चार्जेस डेटा, ठीक है. so these are the general columns, these are general data points which are available in first source database, ठीक है. उसके बाद में आपको देखना है स्पेसिफिकली, आपको देखना है कि फॉर एग्जांपल अभी हमने क्या फिल्टर लगाया, सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन वाइज लगाया. आपने जो भी फिल्टर्स यूज किए हैं वो यहाँ पे आपको दिखेंगे. फिल्टर्स यूज whether it's listed or unlisted, तो यहाँ पे उसका listing status which is unlisted, nature of business we had selected agricultural allied activities, and then we have sorted by nature of business SMB, ठीक है. अभी इसके ऊपर मुझे फर्दर फिल्टर लगाना है, राइट. तो वो फिल्टर में सपोज मुझे अभी जैसे लोकेशन वाइज आइडेंटिफाई करना है, ठीक है. तो ये यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है. either I can search by state in which the company is registered, right, or maybe I can also use ROC. so suppose मेरा ऐसा हो सकता है कि कोई कंपनी दूसरे ROC में रजिस्टर्ड है बट उनका ऑपरेशन गुजरात में है, राइट. ऐसा पॉसिबिलिटी है, right. so you want to see or you want to find the companies based on the ROCs in which they are registered, right. उस केस में you can also select from that ROC. या फिर आपको चाहिए कि अभी एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज में कौन कौन सी कंपनीज रजिस्टर्ड है, राइट, इन गुजरात. तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट गुजरात, और उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है. तो आप उसमें फर्दर जाएंगे तो आपका ये लिस्ट ऑफ कंपनीज आ जाएगा, कौन कौन सी कंपनीज अभी गुजरात में रजिस्टर्ड है या फिर उसका ऑपरेशंस यहाँ पे गुजरात में. ROC is different and then having their operations in Gujarat is different. तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सारी कंपनीज आपको यहाँ पे करेंगे, जो कि हमने जो फिल्टर्स क्राइटेरिया दिए थे उसके अंदर है. तो गुजरात, अनलिस्टेड कंपनीज इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज एंड नेचर ऑफ बिजनेस इज असेंबली, तो उसको हमने ऑर्डर में रखा है. इसमें जैसा मैं आपको बता रहा था कि उसमें आपको फर्दर जाके देखना है. You might be knowing many companies. Suppose आपको most of the users को पता होगा Data from Irrigation India, which is a Baroda-based company, right? तो उसका आपको देखना है. फिर अगेन लाइक जैसा हम एक एक कंपनी का देख रहे थे, सिंगल व्यू फर्स्ट व्यू देख रहे थे, राइट. जैसा उसका पूरा डेटा भी आ जाएगा.
download the complete annual report if you want, and the financial report in this format is also available. ठीक है, अभी आपको फॉर एग्जांपल चाहिए कि these are the few of the filters which we have already done. उसके ऊपर फर्दर फिल्टर आपको लगाने हैं तो आप लगा सकते हैं, जैसा कि बेस्ड ऑन द ऑथोराइज्ड कैपिटल और पेड अप कैपिटल मुझे चाहिए only those companies which are having their authorized capital above 100 lakhs. Right, so I can select 100. I can run search. ठीक है, तो ये 100 lakhs के ऊपर वाले सारी कंपनीज आपके पास यहाँ पे आ गई. ठीक है, और इसको आपको फर्दर डाउनलोड करना है, तो दैट ऑप्शन इज ऑल्सो देयर. राइट, एंड देन कम्स योर एनुअल रिपोर्ट्स. तो आपको सर्च करना है कौन सी कंपनी ने कौन से साल में क्या एनुअल रिपोर्ट फाइल किया है. ठीक है, सपोज अभी जो भी लिस्टेड कंपनीज है उसमें से काफी सारी कंपनीज ने अपने एनुअल रिपोर्ट्स फाइल कर दिए होंगे. राइट, बट ऐसा हो सकता है कि 2021 के लिए जो नॉन लिस्टेड कंपनीज है उसमें से काफी सारी कंपनी ने अपने एनुअल रिपोर्ट फाइल नहीं किया है. So if you want to find, you want to search, say for example from June 21, 1st June 21 से लेके अभी तक का, for example I'll take 15, ये डेट्स के बीच में जिसने एनुअल रिपोर्ट फाइल किए हैं. राइट, तो वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं. ठीक है, इसमें से कोई कंपनी होगी, ताकि ऑलरेडी हमने एक सिलेक्शन किया था कि ऑलरेडी फिल्टर लगा के ही हमने देखा था. राइट, तो इसमें से कोई कंपनी नहीं थी जो, एंड अगेन वी हैड सिलेक्टेड नॉन लिस्टेड कंपनीज. करेक्ट, तो उस केस में कोई कंपनी होगी. बट इन केस इफ देयर इज सम कंपनी, वो आपको मिल सकता है, या फिर अगर आपको रिफाइन करना है, रिसेट करना है, तो भी आप ये डेटा सेट कर सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी 2020 ले लेता हूँ, शायद इस कंपनी से मिल जाएगी. I need to reset the full, and then I think it will allow me to get the data. Right. So there are various filters which are available. You can also search in terms of location. For example, मुझे find करना है कि कोई specific pin code. For example, I'm taking one pin code is 30015. ये specific pin code में कितनी कंपनी रजिस्टर्ड है. राइट, कई बार ऐसा होता है कि जो कुछ डिस्ट्रिक्ट है, राइट, या कुछ एरिया ऐसे है जो एग्रीकल्चर डोमिनेटेड एरिया है. राइट, तो वहाँ पे वो पर्टिकुलर पिन कोड्स में कौन कौन सी कंपनीज रजिस्टर्ड है वो आपको फाइंड करना है. तो उस केस में आप यहाँ पे कंपनी सिलेक्ट करके यहाँ पे पिन कोड नंबर का नाम एंटर करेंगे, पिन कोड नंबर एंटर करेंगे, तो उसका पूरा सर्च होके आपके पास ऑप्शन. सो ओनली इन दिस 380015 पिन कोड there are 7,795 कंपनीज रजिस्टर्ड. ठीक है, इसमें कोई भी कंपनी हो सकती है. इट कुड बी अ LLP और मे बी अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और अ लिस्टेड कंपनी. ठीक है, तो आपको ऐसा लोकेशन वाइज सर्च का भी ऑप्शन यहाँ पे मिलता है. सो यू कैन सर्च लिटरली एनी कंपनी बेस्ड ऑन योर सेट ऑफ क्राइटेरिया. ये मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया था. वी हैड सर्च बेस्ड ऑन फार्मर प्रोड्यूसर. आपको कोई वर्ड्स के हिसाब से सर्च करना है तो भी आप कर सकते हैं. ठीक है, कई बार आपको ऐसा भी होगा कि मुझे देखना है कि सपोज स्पेशली फॉर स्टार्टअप्स. ठीक है, कि आपको देखना है कि भाई कोई स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन के अंदर अभी कितने स्टार्टअप्स आ रहे हैं. राइट, तो आपको देखना है कि सपोज से फॉर एग्जांपल आपको देखना है 2019 1 जुलाई 2019 से लेके कल तक. ठीक है, ये डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इस 19 से लेके अभी तक कल तक कितने कंपनीज इनकॉर्पोरेट हुए हैं. ठीक है, तो okay, the list is greater than 1 lakh, so I need to refine the search. Let me see if I can select it and get it. Okay, इसमें ये पर्टिकुलर ड्यूरेशन इस 19 से 21 के बीच में मोर देन 1 lakh कंपनीज रजिस्टर्ड हुई थी. राइट, तो आई एम जस्ट अगेन गिविंग द सर्च. It may take 1 minute, but it will come. Right. So I hope you are able to understand. जो मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, जो डेटा आपके लिए काम का है, राइट, वो सारे ऑप्शंस आपको अभी समझ में आ रहे हैं. मैं यहाँ पे देखता हूँ 2020 देखता हूँ.
बिकॉज जो लिस्ट है वो 1 लाख से ऊपर जा रहा है, तो एक ही क्लिक में या एक ही शीट में वो पूरा डेटा उसमें लाना पॉसिबल नहीं है, करेक्ट? Okay, I'm again giving a try. 1 जुलाई 2020 से लेके अभी तक ये कंपनी रजिस्टर हुई जिसका जैसे वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, राइट? तो नाउ दिस आर द कंपनीज जो उस पर्टिकुलर पीरियड में रजिस्टर हुई है, ठीक है? इसके ऊपर फर्दर आपको फिल्टर एक लगाना है, मोस्टली दिस आर ऑल एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, बिकॉज उसका क्लासिफिकेशन इसके अंदर में आएगा, ठीक है? बट अगर आपको ऐसा चाहिए कि डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्लस आपको ऐसा, फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा देना है from 1st July 2020 to the latest date, and then say for example in Gujarat how many companies got registered during this period, right? So ऐसे multiple filters भी एक साथ में मैं दे सकता हूँ, right? So there are 14,000 companies which are registered during this period. सो ऐसा आप मल्टीपल फीचर्स दे सकते हैं, आपने जो भी फीचर्स दिए हैं वो फीचर्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, ये होने ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है. सो यू कैन सर्च कंपनीज बाय बेसिक इंफॉर्मेशन, यू कैन सर्च कंपनीज बाय लोकेशन which we have seen. Again in location you can search by pin code number, you can search address within, for example Ladnagar, there is an area in Gujarat, in Ahmedabad specifically, right? तो प्रधानमंत्री में कौन सी कंपनीज जो रजिस्टर हुई थी ये ड्यूरेशन में, राइट? जैसे आपको स्पेसिफिक सर्च करना है तो भी आप वो पर्टिकुलर एरिया के नाम के हिसाब से भी सर्च कर सकते हैं, राइट? स्पेशली सम पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, राइट? कुछ एरिया में काफी सारी ऐसी कंपनीज होगी, राइट? तो ऐसा आपको एरिया वाइज भी सर्च करना है तो आप कर सकते हैं. यहाँ पे classifications we have seen, you can select either listed non listed company, right? I'm not going to detail now. You can search by NIC, आप NIC यहाँ पे enter कर देंगे तो आ जाएगा. Capital we have seen and in the reports we have seen, ठीक है? And then you want to sort by SNE descending, that is also possible. The last thing here is directors association, right? So for example जैसा हम देख रहे थे कि कैडिला हेल्थ केयर में हमने देखा था कि अभी जैसे कि पंकज पटेल है, तो पंकज पटेल दूसरी कौन कौन सी कंपनी में अभी डायरेक्टरशिप होल्ड कर रहे हैं, राइट? तो वहां पे क्या है कि हमने वो कंपनी सिलेक्ट किया था, उसके बाद में हमको पता चला. बट अगर आपको रिवर्स क्वेरी करना है कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई डायरेक्टर का नाम भी अवेलेबल है, ठीक है, बट आपको देखना है कि वो दूसरी कौन सी कंपनी में अभी डायरेक्टरशिप होल्ड कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल आई विल टेक मुकेश अंबानी, व्हिच वी एवरीवन नो, ठीक है? So I'll just search Mukesh Ambani. You all know this person, right? So मुकेश धीरूभाई अंबानी, right? इनके कौन कौन सी कंपनी में अभी डायरेक्टरशिप है, right? So he's director in Reliance Foundation, Reliance Industries, Reliance Jio, right? Petroleum, Retail Ventures and IPCL, right? ये सभी कंपनीज में वो डायरेक्टरशिप अभी होल्ड कर रहे हैं, राइट? तो ऐसा आपको कुछ सर्च करना है, डायरेक्टर के नाम के हिसाब से सर्च करना है, या उसका एक कोड होता है या एक नंबर होता है, उसको डीन नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, या फिर उसका पान नंबर है आपके पास, राइट? तो उसके हिसाब से भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो. तो बेसिकली ऑल ROC एंड MCA डेटा, राइट? जो भी कंपनी फाइल करती है वहां से हम ये डेटा कैप्चर करते हैं और वहां से ये डेटा एक्सट्रैक्ट करके आपको अपना कुछ रिसर्च करना है, आपको कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है? So I think this is there in this database. Firstsource and Commodities, these are the two of the easiest databases to extract the data, right? Just simply click on few of the tabs and download the data. Okay. Any questions till now? ठीक है, आपने कुछ अगर कोई रिक्वेस्ट किया है, कोई कंपनी आपने देखा है या पास्ट में कुछ आपने जैसे कि अभी हम देख रहे थे कुछ कंपनीज, राइट? तो वो कंपनीज का यहाँ पे लिस्ट मेरे पास आ जाएगा कि ये कंपनी ने व्यू किया है, अदानी बिल्डकॉन है, ये कैडिला हेल्थ केयर वगैरह है,
राइट। ये जो भी कंपनी मैंने देखा है तो उसका यहाँ पे रिसेंटली व्यूड में आपको दिखेगा। और आपने अगर कोई कंपनी, जैसा मैं आपको बता रहा था कि आपको वो डाउनलोड करना है ऑप्शन, अगर आपने कुछ रिक्वेस्ट किया कि मुझे ये कंपनी अपडेट करके दो, राइट, तो वो केस में क्या होगा, आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपने ये कंपनी का अपडेशन का रिक्वेस्ट डाला था, तो वो आपको यहाँ पे सेक्शन है माई रिक्वेस्ट करके वो सेक्शन में आपको मिल जाएगा। Then again, like in commodities, we had one option called as SIC clarifications. यहाँ पे भी SIC clarifications का ऑप्शन है, ठीक है। अभी आपको SIC clarification में यहाँ पे भी कुछ क्वेरी पोस्ट करना है। सपोज आपको आपने कुछ रिक्वेस्ट प्लेस किया था कोई कंपनी के नाम का, राइट, बट देयर एनुअल रिपोर्ट वाज नॉट अवेलेबल। So in that case, you can just write the company name. आप यहाँ पे ईयर लिख दीजिए, डेट लिख दीजिए, और आपका जो भी मैसेज है, मींस यू आर नॉट एबल टू गेट द एनुअल रिपोर्ट और समथिंग। कई बार आपका फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में कई बार ऐसा हो सकता है कि यू आर नॉट एबल टू गेट द कंपनी एनुअल रिपोर्ट, राइट। तो वो इवन इन केस ऑफ LLP यू मे और मे नॉट गेट, राइट। तो आई एम नॉट श्योर, बट यू कैन जस्ट चेक विथ आवर टीम बिकॉज दे आर द टेक्निकल पीपल हु वर्क ऑन दिस डेटाबेस। तो आप उनको क्वेरी कर सकते हैं, उनको क्वेरी पूछ सकते हैं, आपका कुछ भी टेक्निकल इश्यूज है उस केस में आप वहाँ पे यहाँ पे एक ऑप्शन है जो लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज देयर इन केस ऑफ एनी क्वेरीज। आई थिंक आई एम रैपिंग अप द सेशन बिट अर्ली, right? I can still take some time and explain some other databases, but I don't want to do injustice to you. आपने सुबह भी काफी ट्रेनिंग अटेंड किया है, अभी भी आप close to 2 hours, more than 2 hours you have been there in this session, right? And again, you have to see me again tomorrow. Same person will be giving training, so I don't want to do that, right? But if there are some questions, queries, किसी ने कुछ डेटा ट्राई करने का, लाइक एक्सट्रैक्ट करने का ट्राई किया है, काफी यूजर्स कैंपस में भी हो सकते हैं, राइट। यू आर ट्राइंग समथिंग, यू आर नॉट एबल टू गेट द डेटा, पास्ट में ट्राई किया है, आपको पता नहीं चल रहा था कुछ, तो ऐसा कुछ क्वेरीज है, सो आई विल बी वेलकमिंग दोस क्वेश्चंस, क्वेरीज और सम असिस्टेंस रिक्वायर्ड। So there is no queries from the participants. Okay. Yes, sir. So yeah, like, is this session is completed, right? Yeah, from my end it is completed, but I am available for next 10 minutes. But I think the users or the students especially, they would be exhausted because उनका क्लास का जो टाइमिंग है वो थोड़ा फिक्स रहता है। But Yes, sir. This was more of a like 2 parts में उनका सेशन हुआ है, so I appreciate their patience. I appreciate that they have joined this session, right? And I'll be available for next 10 minutes in case if you have any queries or questions. I think someone has posted some query. Okay, there is one query. I don't know who has posted this. Sir, as we can see, all of this data only can catch based on some subscription. This is not open source data. So if my university, this is BHU is Banaras Hindu University, if I'm not mistaken, haven't subscribed for CMI. Okay, I don't know who has posted this question. But if your university has not subscribed, then I would recommend you to subscribe because this is a subscription-based service. It's not an open source data. Okay. Thank you. I hope I have answered your query. Yes, sir. Okay. Yeah. So I think Yogesh sir is also there. He has also joined. Yogesh sir, you would like to comment anything? You have a vast experience in all this data and in teaching, especially. Any research, so anything you would like to add or something? If he's available, I don't know, because we were to go for some meeting, so I don't know if he's there. If there is some comment or some queries, I'll be glad to answer. Yes, sir. He's not available right now. Like, yeah. No problem. Fine. Sure. So let me wait for 5 minutes. Participants, any questions you have in your mind? Anything you can ask because it's more of a open forum, and I would like to take those questions because I want कि आप जितना भी possible है आप use कीजिए इसको, maximum use कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि we always rely on Google, ठीक है, कुछ भी queries है, कुछ
कुछ असाइनमेंट आ गया, कुछ प्रोजेक्ट आ गया, कुछ भी फैकल्टी ने बोला कि ये सर्च करो, वी ऑलवेज रिलाई ऑन गूगल. बट गूगल इज समथिंग कि जहाँ पे आपको जितने भी डेटा है उसके अलग पेजेस में वो रिपोर्ट्स आएंगे. ठीक है, अगर आपको ऐसा स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे अभी हम सर्च कर रहे थे कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज में रजिस्टर्ड है, राइट, या फिर स्पेसिफिक पिन कोड नंबर में अवेलेबल है. ठीक है, तो ऐसा डेटा आपको गूगल नहीं दे सकता है, बिकॉज गूगल ऑल्सो हैज सर्टेन लिमिटेशन. लेकिन दिस इज मोर ऑफ अ सर्च इंजन, दिस इज नॉट अ डेटाबेस, राइट. जैसे कि हमने यहाँ पे देख रहे कमोडिटीज है, फर्स्ट सोर्स है, ये सब डेटाबेसेस है जो आपको एक्चुअल रिसर्च है, एक्चुअल स्टडी है, राइट, उसके लिए यूजफुल हो सकते हैं. There will be several students जिसका maybe because of this pandemic they may not be able to go to some internship, some summer internship or something, right. तो वो केस में वो सारे students को भी ये particular database helpful होगा. They can do some sort of secondary research on agriculture sector, on companies, on some of the industries. कल हम इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट. तो ये सारे डेटा कलेक्ट करके अलग सोर्सेज से जो हमने कलेक्ट किया वो डेटा यूज करके आप खुद का एक अपना एनरिच्ड प्रोजेक्ट बना सकते हैं. ठीक है, क्या होगा कि कई बार कंपनीज भी ऐसा डेटा सर्च करती होंगी, बट इफ यू हैव सर्टेन रिपोर्ट्स विथ यू, यू हैव सर्टेन डेटा विथ यू, विद द सपोर्ट ऑफ दिस डेटा आप कुछ अगर प्रेजेंट कर रहे हैं फ्यूचर में भी कोई भी कंपनी में, राइट, तो इट विल हेल्प यू इन योर प्लेसमेंट्स एज वेल, इट विल हेल्प यू इन एनहांसिंग योर नॉलेज एज वेल, राइट. So I hope you will use it optimally, and we'll definitely see you tomorrow at 10 a.m. and we'll yes. Yes, sir. If there will be any query, we will ask tomorrow. No problem. Yes, sir. So yeah, thank you very much, sir, for educating all of us regarding databases, how to access the site, how to collect the data, and how it will be used in future and in every perspective. So thank you very much for today's session. We will be continuing next day, the technical session 3, tomorrow 10 a.m. right? So I request all the participants to join this technical session 3 tomorrow. Okay, thank you. Yeah, we'll have a small break at around 11:30 to say for 5-10 minutes tomorrow. Yeah. Because I don't want to continue for a long stretch, right? I want to give a break to the users, let them grasp and Okay, not an issue, sir.